So hello guys, welcome back to my eFootball 2026 लाइव स्ट्रीम। तो आज मैच होने वाला है फाइनल, रियल लाइफ में भी और हमारा गेमिंग लाइफ में भी। तो मैं आ गया आप सभी के साथ, आप सभी के पास लाइव स्ट्रीम में जुड़ने। तो हम लोगों का मैच स्टार्ट हो गया भाई। फुटबॉल का मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का मैच स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे भी हम मैं लगा देता हूँ, क्या होता है देखा जाएगा फिर। तो पहले आप लोग एक कमेंट करके बताओ कैसे हो आप लोग, और कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम वॉच आउट कर रहे हो, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो हम लोग का मैच तो स्टार्ट हो गया भाई। यहाँ पे गेम भी स्टार्ट कर देता हूँ, मैच लगा देता हूँ ये अर्जेंटीना और स्पेन का। नहीं लगाऊंगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा भाई, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, मैच में स्टार्ट करने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, मेरे स्ट्रीम पे आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए। आप लोग कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना भाई। और मैच तो भाई आज का बहुत तगड़ा मैच चल रहा है भाई। मतलब एक तरफ मेसी है, एक तरफ लेमन है भाई। क्या पता भाई कौन कप लेगा, बट आई गेस मेसी लेगा भाई। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आज का मैच में कौन जीतने वाला है, मेरा जो पिन कमेंट करके मैं रखा हूँ उसको छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बता दो भाई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा गेम स्टार्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे नेटवर्क चकती घूम रहा है, डाउनलोड इन लाइव अपडेट प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो हो गया अपडेट वगैरह कुछ भी था तो हो गया भाई। सब लोग बैठा दिया यहाँ पे। ई फुटबॉल अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन में भी देख रहा हूँ, मेरा भी लाइव स्ट्रीम चल रहा है। तो आप लोग कैसे हो, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई। देख लेता हूँ वॉइस कैसा आ रहा है मेरा। तो वॉइस कैसा आ रहा है थोड़ा चेक करना पड़ेगा, नहीं चेक करूँगा ना नहीं चलेगा भाई। वॉइस कैसा आ रहा है मैच में लगा दूंगा अभी। अभी के लिए स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना भाई, लाइव नहीं दिखा रहा है भाई मैच यहाँ पे। क्या हो गया भाई, लाइव स्ट्रीम बंद हो गया क्या भाई? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाइव चैनल आने के लिए भाई। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अर्जेंटीना भाई, मैं तो अर्जेंटीना का सपोर्ट हूँ भाई। आप कौन सा टीम का सपोर्ट करते हो, जल्दी से बताओ आज का मैच में। और हर बंदा ही मेरा तुमने यूज़ किया हो क्या? अरे यार, सब कोई यहाँ पे लगा के रखा है भाई, डिवीजन में वगैरह वगैरह कुछ भी। नियस्ता का पैक आया भाई, मार दूँ क्या? 100 है भाई, मार देता हूँ आप लोगों के लिए। चलो सबसे बड़ा भाई लग जाएगा तो अब बहुत नहीं फंसा। चलो 100 रुपया बेकार हो गया मेरा। नहीं होगा। अरे यार क्यों मारा मैं, मारना नहीं चाहिए था मेरे को। 100 है भाई, मार देता हूँ आप लोगों के लिए। चलो बेकार हो गया 100 रुपया भाई मेरा यार। हाँ चलो भाई, इतना बंदा अभी आ गया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई आप लोग कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो। मैच में स्टार्ट करने वाला हूँ फिलहाल, टाइम भी हो गया मेरा। यहाँ पे मैच भी देखना है मेरे को, आप लोग को भी दिखाना है मैच, गेमिंग मैच। और यहाँ पे लाइव एक चीज़ करना है जो है भाई, प्रेडिक्शन करना है मेरे को। प्रेडिक्शन मैं करके आ जाता हूँ, फिर मैच स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग भी प्रेडिक्शन कर दो कमेंट बॉक्स पे जल्दी से जल्दी। और मैच मैं स्टार्ट नहीं करूँगा भाई, हाफ टाइम का बाद भी देख पाओगे, जितना देख पाओगे ना उतना ही देखना काफ़ी है भाई। तो 100 लाइक कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, लाइव स्ट्रीम पे 100 लाइक ठोक के मारो भाई। और कम से कम भाई 20 कमेंट कंप्लीट कर दो भाई, प्रेडिक्शन मैंने रखा है 20 प्रेडिक्शन का कमेंट करके कंप्लीट करो भाई। और 100 लाइक जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो जल्दी से जल्दी। और मैच में स्टार्ट नहीं करूंगा भाई, हाफ टाइम का बाद भी देख पाओगे, जितना देख पाओगे ना उतना ही देखना काफ़ी है भाई। कमेंट करो जल्दी से जल्दी, कमेंट करो भाई। कमेंट 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 फास्ट भाई, कमेंट चाहिए भाई। कमेंट नहीं होगा तो मैच स्टार्ट नहीं होगा भाई। यहाँ पे कमेंट करो भाई, कमेंट तो सभी को करना पड़ेगा यार। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। अर्जेंटीना का पावर दिखा दो भाई, आज सोशल मीडिया में अर्जेंटीना फैन लोग अर्जेंटीना का पावर दिखा दो भाई। एक लाइव स्ट्रीम में 1 मिलियन व्यूज़ चला जाएगा भाई, ये वाला लाइव स्ट्रीम में चला जाएगा भाई। मैं गेस कर रहा हूँ जाएगा। तुम लोग सपोर्ट करोगे तो, इंडियन से देख रहे हो तो भाई, मेरा हिंदी बात समझ में आ रहा है तो भाई। चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मैं आज का मैच अर्जेंटीना के नाम। क्या कहते हो दोस्तों? चलो मैच में लगा देता हूँ यहाँ पे। अर्जेंटीना ले लिया, नेक्स्ट कर दिया भाई। और एक चीज़ यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, वो चीज़ क्या है आप सभी को मैं बता देता हूँ। वो चीज़ है कि यहाँ पे दोस्तों
भाई लोग बहन लोग सुन पा रहे हो ना मेरे को, तो सुनो अच्छे से सुनो। मैच अगर देखना है ना 100 लाइक जल्दी से ठोक के कंप्लीट करो। अगर 100 लाइक कंप्लीट नहीं होगा ना भाई, कैसे मैं स्टार्ट करूँगा भाई। और आप लोग कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम वॉच आउट करो, एक छोटा सा कमेंट तो कर सकते हो भाई। कहाँ से लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, कमेंट करके बता तो सकते हो भाई। हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में उंगली है, तो उंगली से कमेंट करो ना भाई, जल्दी से जल्दी। मैं भी यहाँ पे मैच स्टार्ट करता हूँ ना भाई। हाँ लेजेंड पे देख सकते हो ना गाइस, यहाँ पे लेजेंड पे मैच होने वाला है हम लोगों का। आप लोग देख सकते हो, लाइव देख लो भाई। ई फुटबॉल का 2026 इंटरनेशनल कप का फाइनल मैच अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, वो होने वाला है हम लोगों का इधर लाइव। और अभी मेरा लाइव स्ट्रीम चला है 5 मिनट, और 5 मिनट में 200 व्यूज़ कंप्लीट हो गया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत प्यार देने के लिए, इतना इतना प्यार देने के लिए मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्ट्रीम पे आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग कहाँ से मेरा स्ट्रीम व्हाट्सअप कर रहे हो ना, छोटा सा कमेंट करो। मैच में अभी स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ देखो लेजेंड पे है ना भाई, लेजेंड मैंने बाद में भाई, अभी मैच स्टार्ट करता हूँ भाई। मैं धमाका वाला मैच होने वाला है भाई, अभी देख सकते हो भाई, लाइव मैच, धमाका वाला मैच होने वाला है। बूम बूम फोड़ जाएगा भाई। मैच स्टार्ट कर दिया मैं यहाँ पे अभी, मुझे भी मैच देखना है भाई, मैच देखने के लिए जाना है। और 1 लाइक कंप्लीट हो गया अभी के लिए। चलो 2 लाइक कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच भाई, जो जो बंदे ने लाइक किया हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अर्जुनीने की तरफ से, मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार है, मेसी की तरफ से भी प्यार मुबारक हो। चलो मैच में स्टार्ट करते, तो मैच स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, गेम प्लान। अच्छा ये, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे तो बॉल सही है, बट एक चीज़ है क्या, वो क्या है पता है क्या, स्टेडियम। स्टेडियम में सिलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। स्टेडियम जो है ना भाई, वही रैंडम वाला स्टेडियम में मुझे खेलना पड़ेगा भाई। अर्जेंटीना का मैच स्टार्ट हो गया भाई। चलो लगा दिया मैच, काफ़ी अच्छा वाला मैच होने वाला है। अभी आ गया हम लोग का, कौन आ गया भाई ये, और देखो स्पेन आया पहले। स्पेन का बंदा लोग फील्ड पे मौजूद हो चुका है भाई, ठीक है। ये देखो स्पेन का बंदा लोग आया है यहाँ पे, और अर्जेंटीना भी आ गया भाई यहाँ पे। ये कौन सा ड्रेस लेने वाला हो भाई आज, आज का मैच में, आज का मैच में कौन सा ड्रेस लेने वाला हो भाई, कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई। कमेंट करके ज़रूर बताओ आज का मैच में कौन सा ड्रेस लेने वाला हो। 100 लाइक करो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, 100 लाइक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। 100 लाइक अभी ठोक के कंप्लीट करो भाई, मैच अभी स्टार्ट कर दूंगा। तो भाई जल्दी से जल्दी 100 लाइक कंप्लीट कराओ भाई, आप लोगों से 100 लाइक कंप्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पे यार। मैच कैसे देखोगे आप लोग, 100 लाइक कंप्लीट कराओ भाई, अभी तक 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ भाई। मैच तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ज़रूर दिखाऊंगा, रिजल्ट भी बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा भाई। यहाँ पे लाइव प्रेडिक्शन चल रहा है, कमेंट करके बताओ ना भाई कौन सा टीम में खेलना है भाई, ठीक है। मतलब सपोर्ट करना है भाई आपको। खेलना तो मतलब बहुत मुश्किल की बात है भाई, अभी अब इंडिया में हो फिलहाल, तो क्लब में भी चांस मिलना बहुत मुश्किल की बात है इंडिया की तरफ से। मिल जाएगा भाई, पॉलिटिक्स नहीं चलेगा ना इंडिया में, तो भाई फुटबॉलर क्या, फुटबॉलर का बाप भी मिलेगा इंडिया में। तो वही बात है भाई, हम लोग मेहनत करने वाला इंसान है इंडियन वाले, और ज़रूर कर पाएंगे, इन लोगों से अच्छा मेहनत करेंगे भाई। बट हाँ एक चीज़ है कि आप लैतिन लोगों के पैर में ना एक जादू रहता है, मैजिक, जिसके कारण ना पूरी दुनिया को भाई अपनी ओर खींचता है। ये लोग गेम दिखाता है फिर खींचता है, हम भी गेम देख के खींचा हुआ है ना, तो आपको भी मैंने थंबनेल देख के खींचा जैसा, ये लोग भी गेम प्ले देख के खींचता है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आप लोग कहाँ से ना भाई मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो ना, कमेंट करो भाई, कमेंट करोगे ना तभी जाके मज़ा आएगा भाई। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का मैच स्टार्ट हो गया भाई, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। आज का रात का फाइनल बहुत बढ़िया फाइनल मैच होने वाला है, तगड़ा वाला मैच होने वाला है, तगड़ा वाला मैच होने वाला है। क्या होगा किसी को नहीं पता, ना जानता है फीफा प्रेसिडेंट, ना जानता है अर्जेंटीना कोच, ना जानता है स्पेन का कोच, ना जानता है कोई।
तो कुछ भी भविष्यवाणी भी यहाँ पे कह नहीं सकता, बट एक भविष्यवाणी मैं लाइव में अभी कह रहा हूँ, अर्जेंटीना आज का मैच जीतने वाला है। क्यों पता है भाई? मेसी आया था इंडिया में, भोले बाबा का पूजा करके गया है, और आज श्रावण मास का पहली सोमवार है। सबको हर हर महादेव भाई, शुभकामनाएं। इंडिया से अगर देख रहे हो ना भाई, हर हर महादेव भाई। और अगर आप भोले का भक्त हो ना भाई, तो एक छोटा सा नीचे कमेंट करो हर हर महादेव बोल के, तो मेसी आज का मैच जीत जाएगा। क्योंकि इंडिया में आके भोले बाबा का पूजा करके गया था मेसी, ठीक है, सबसे बड़ा बात है ये। तो देखा जाएगा क्या होता है, मेसी जीतेगा या फिर नहीं जीतेगा। तो 100% कोशिश तो कर रहा है मेसी। तो आप लोग भी सपोर्ट करो ऐसे ही मेसी को जिताने के लिए। और 4 लाइक कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच भाई। 100 लाइक कंप्लीट करा दो भाई, फिर जाके मैं हाफ टाइम का बाद रियल लाइफ मैच आप लोगों को स्कोर बता दूंगा, रिजल्ट भी दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा भाई। अभी के लिए सिर्फ 100 लाइक कंप्लीट कराओ भाई, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो जल्दी से जल्दी। कमेंट बॉक्स खोल के रखा है, लाइव प्रिडिक्शन दे के रखा है भाई। 1000 व्यूज़ कंप्लीट होने ही वाला है मेरा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराओ भाई। 1000 व्यूज़ कंप्लीट होने ही वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतना बंदा आने के लिए एक साथ आज का मैच पे। आज का मैच मेसी के नाम। चलो दोस्तों, मैच का थोड़ा मैच स्टार्ट हो गया हम लोगों का। यहाँ पे स्पेन पहले अटैक में है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। देखो ऐसा बॉल, अरे लॉन्ग बॉल खेल रहा है स्पेन पहले पहले। अरे अर्जेंटीना भाई घुसने मत दो भाई यहाँ पे। अरे भाई सब कोई भी है, घुसो मत भाई, घुसो मत यहाँ से। हाँ बॉल क्लियर कर दो। अरे यार, अपना ही डी बॉक्स की तरफ क्यों बॉल भेज रहे हो यार? बाहर का तरफ भेजो ना, बाहर का तरफ, उस साइड भेजना चाहिए था तुमको यार। इस साइड भेज रहे हो यार, इस साइड भेज रहे हो। हाँ बचा लिया मार्टिनेज, नहीं बचाता था ना कान के नीचे बजा देता तेरे को। यहाँ पे मेसी ने भाव लगा के बैठा है भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? ऐसा नहीं करना चाहिए मार्टिनेज, अच्छे से जान लगा के सेव करो भाई। दिख रहा है इतना बंदा लोग यहाँ पे, मजाक चल रहा है क्या? चलो ठीक है, बहुत अच्छा लाइव स्ट्रीम चल रहा है हम लोग। और अरे एक चीज़ मैं बताना भूल गया भाई, लाइव स्ट्रीम तो इतना दिन बाद भाई सब कुछ जुगाड़ ला के थोड़ा थोड़ा करके लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, फिर जाके ना एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है भाई। सिस्टम में कुछ ना गड़बड़ी हो गया मेरा पीसी में। सिस्टम कुछ ऐसा दिखा स्टार्टअप वगैरह वगैरह, मतलब मुझे बूटिंग बूटिंग करना पड़ेगा बाद फिर से, मतलब नया कुछ अपडेट आया है, उसको डाउनलोड करके बूट करना पड़ेगा फिर से मुझे लगता है। तो ऐसा ही इस कारण हो रहा है शायद, लगता है मेरे को। फिर ठीक हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं ठीक होगा तो बहुत बुरा होगा भाई। क्योंकि भाई इतना मुश्किल से लाइव स्ट्रीम का सामान जुगाड़ कर रहा हूँ धीरे धीरे, फिर भी जाके मतलब एक चीज़ जुगाड़ करता हूँ दूसरा चीज़ ख़राब हो जाता है, एक चीज़ जुगाड़ करता हूँ दूसरा चीज़ ख़राब हो जाता है। ऐसा ही मेरा किस्मत चल रहा है भाई, टूटी फूटी नाव के जैसा। मतलब कैसे भी करके नाव को मतलब उम्मीद तक लेके जा रहा हूँ, एक उम्मीद कि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं थोड़ा आगे जा पाऊँ। कोशिश कर रहा हूँ भाई अभी, मतलब मेरे के पास एक ही तो पीसी है ना भाई, उसको अभी नहीं रिपेयर करूँगा तो भाई लाइव स्ट्रीम तो मेरा गियो सही ना। तो अर्जेंटीना बढ़िया मैच खेल रहा है यहाँ पे। चलो चलो आप लोग मैच का मज़ा लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोग कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम वॉच कर रहे हो? और ये देखो भाई, अर्जेंटीना गोल मार दिया, पहला गोल अर्जेंटीना के नाम। चलो बहुत बड़ा हिस्ट्री यहाँ पे बदलने वाला है, अर्जेंटीना ने गोल मार दिया भाई, गोल मार दिया अर्जेंटीना भाई। हिस्ट्री भाई बदल जाएगा आज का मैच में। Argentina penetrate first. It is a truly precious lead. Pedri. Ferran Torres. He's on it. Can he get away? He's shifting through the... Pedri! They've got to be quick to recover this.
Oh, and that one's done no damage in the end. Spread it left. Gavi in acres of space out wide. Cucurella. And he's gone backward here. That has been slung wide. Martinez. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Llorente was in no mood for any of that. This is the time you need that pace. Now it's Oyarzabal. Rodri. And no, he's seen through all of that. Now it's Simeone. He's got away. Simeone clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Now it's Oyarzabal. And here's Llorente. He's a sharp little ball here. Llorente has it out wide and in space. Back in once more. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. He's picked his way through. Now it's Martinez. Good ball, good take. Well, now here's a good battle, bicep to bicep, and that's gone loose. Fabian Ruiz. Llorente. Now Fabian Ruiz. Played out to the left flank. And it's Cucurella. Cucurella. And that's gone behind for a goal kick. Perez. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Simeone. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pedri. Rodri. Mikel Oyarzabal. Romero. Lo Celso. Rodri. Gavi. Pedri. Nice interception. His positioning was spot on. Short changes him with that pass. Now it's Gavi. And it's Cucurella. He is through here. Oh, good take in a good area. And for the first half, that is that. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Argentina coming in at half-time, leading by 1-0. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Argentina are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. So the action resumes. Argentina definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. And he's heaved it away. And that's been won straight back. Mikel Oyarzabal. It's Pedri. He's looking wide. They want to be quick here. It's breakaway time. Played through into space.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Gavi, and here's Ruiz. Nice sequence of passes, this. Now that looks a decent ball. Now it's Simeone. Paz is onto this. Llorente. Ferran Torres. And that's a throw-in. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Perez. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Pedri. Spread to the right. Ferran Torres has it in a wide position. Spain really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Now it's Ferran Torres. Lovely feet. Gavi. That has earned a reprieve for the time being. Flings in across. And that has been cleared. Spain really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Gavi! It's off target and by quite a way. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Spain choosing to make the first change. El dorsal 9, el dorsal 21 serán sustituidos por el dorsal 19, el dorsal 17, el dorsal 26. Oh, good spread. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Goes down, but nothing given. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pedri. Just a quarter of an hour to play. No outsmarting him this time. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And he should have made them pay. What a pass, one that literally dropped into his path. It was asking to be finished. Great leap! Defending of the desperate variety. Oh, beautifully shaped ball. Tries to get it clear. Lovely pass, but can he get there? Pass somewhat off target. There's the clearance. Now it's Yamal. And that could set him on his way. Williams. They've got a corner here. Pedri plays it short. Oh, some astute defending there. And now a sudden chance to counter.
I think we're just about done here. Simeone. Kubasi. Laporte. And it's Pedri. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Habrá un minuto de descuento. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. It's gone out for a throw-in. And he's managed to get free. And he's had a shot! And a neat finish! And right near the end, we have parity. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a double. Finishing it off was quite simple after that. "90 minutes done then, but that is not the end of it." So, that was the second half. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. Well, no winner so far, but somebody has to be the winner. And extra time is next. Cambio de jugadores en España. El dorsal No winner 5. in 90, 30 more to come. Serán sustituidos por Argentina el dorsal conceded an 12, equaliser late el on. dorsal 6. Now they have to do it all again. Do they have what it takes? Oh, he'd have done well to reach that. Paz. Messi. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And he's being shifted off it. And here's Messi. Now it's Simeone. He's beaten the last man. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Merino. He shifted it to the flank. And it's Pedri. Yamal. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. No, he wasn't being taken in by that trickery. There's the whistle. This then the greatest show on the grandest stage. And it's Pedri. And he's picked it up out wide. The cross. Good read, needed to be. Fernandez. Spread out to the left. Tagliafico. And Paz. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. What's going wide left? And it's Pedri. And the finish! Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. They've played it short. Gavi. Great chance! Now that is commitment to the cause.
And it's been taken short. Crosses it in. And he's taking no chances there. Argentina have the chance to go the other way. Fernandez. Very nicely done. Good spot, that. Tries to pass it through. That is ended up in no man's land. Ferran Torres. Referee's given a throw. Pedri crosses. Last-ditch defending, but that'll do. Argentina still without a single shot on target. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Molina. Messi. Played back to the goalkeeper. Laporte. Fabian Ruiz. Gavi. Cucurella. Mikel Oyarzabal touches it back. Now Fabian Ruiz. And it's Llorente. Tagliafico does well not to be outdone there. Now it's Simeone. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Spread out to the left. Now it's Gavi. Oh, that's fabulous. Cross into the box. Getting up there! Against the crossbar. Tagliafico is there, and he can get that clear. Oh, shooting chance! That's destined for the flank. Now it's Simeone. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Cucurella. Pedri. Nicely spread. Now it's Oyarzabal. Some intricate passing, looking to progress the ball. Simeone. And Paz. Simeone. Tagliafico wants to run onto this. That has not gone well. He was under real pressure there. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Laporte. Played out to the left flank. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Now Fabian Ruiz. And here's Oyarzabal. That has been slung wide. Delivers the ball, and straight back out. Kubasi. Gavi. Can he get on the end of this? Drills one in. Certain amount of room for debate here, but a goal kick's been given. Tries to play it through. Gavi picks it up out wide. And that pass surprised everyone, and not in a good way. Into stoppage time, very little left on it. Now it's Simeone. And here's Lo Celso. Knocks it into space. Goes for a shot! And the whistle's gone, presumably for offside.
And that brings the first half to a close. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How do you look back on the first 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. So we're off again. Argentina really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Rodri. And it's Pedri. Swung over. It's a pretty loose pass. Pedri. Now it's Gavi. Molina. And it's Messi. Pedri gets across and deals with it. Gavi. Well, the less said about that pass, the better. Messi is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's Messi. Bumps him off it and wins back the ball. Fernandez. Distributed tidily. Llorente. Here's Rodri. Cucurella. Gavi. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Martinez. And here's Oyarzabal. Now that's well seen too. And he was quick to react. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. That's a good ball out wide. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Kubasi. It's a really well-measured ball. And it's Rodri. Ferran Torres. No, it's come to nothing. Molina is there to clear. Cambio de jugadores en España. Time then for the first substitution of the game. Yeah, it was pretty clear the manager's not been getting what he wants out of his players, so a substitution was going to come. I think it could have been sooner. Argentina are looking to go forward now. Paz. Now Martinez.
Ferran Torres. Llorente, he's found the way through. Williams gets his head on it! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Paz. Now it's Oyarzabal. Over to the right flank. Rodri. And it's Pedri. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Pedri. And here's Nico Williams. Fabian Ruiz ploughing through the middle. Goes looking wide. Simeone providing an outlet on that flank. It's a promising position. Almost nothing left on the clock here. It does seem we're headed for extra time here, unless, of course, there is one last dramatic twist. Tagliafico. And it's Fernandez. Well, it's very much looking like this might be destined for a scoreless outcome. And here's Lautaro Martinez. Out towards the flank. Nicely weighted ball. That's very neat. So no flag here. It's not an especially good pass, that. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Oyarzabal. Ferran Torres stood up well to him there. Fernandez. Romero. Lo Celso. Oh, good read. That was well played, well stopped. How many... So that means another 30 minutes football. So, Jim, any strong opinions after all of that? Well, the scoreline may have a disappointing look about it, Peter, but that's where it ends. I think this game has had a real lively feel, and I'm not ready to give up on it yet. So, a battle of endeavour, enterprise, and now endurance. Cambio de jugadores en España. El dorsal 21. Into extra time we go. El dorsal 26. Passes coming off in quick succession here. Ferran Torres. Great vision. Fabian Ruiz gets flagged offside. तो जैसे कि मेरे गेमर भाई लोग मेरे लाइव स्ट्रीम पे इतना देर तक बने रहने के लिए आप सभी को ना बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग और बहन लोग। भाई यहाँ पे स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का रियल लाइफ मैच जो हुआ है, रिजल्ट है भाई 0-0 और हाफ टाइम हो गया, मतलब हाफ टाइम हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, एक भी गोल नहीं हो पाया। मतलब वो कहना जा रहा था, मतलब क्या यार, कुछ नहीं कहना है एंड कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना है यार। यहाँ पे बहुत मुश्किल, अरे गोल खा जाएगा, ये गोल खा गया और ही मैं यहाँ पे गोल खा गया भाई। बहुत गंदा वाला गोल खाया हूँ भाई यहाँ पे मैं, मतलब इतना गंदा गोल खा गया ना भाई, मतलब कुछ कह नहीं सकता यार। यहाँ पे हाफ टाइम के बाद भी जा रहा है, हाफ टाइम के अंदर भी जा रहे हो यार, मतलब कुछ तो कहना चाहिए था ना भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं कहना चाहिए था भाई।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाइव स्ट्रीम पे आए ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन होने के लिए, देखने के लिए, एक लाइक करने के लिए। तो जैसे कि मेरे दोस्तों, आज सबसे बड़ा इतिहास होने वाला है, विश्व के सबसे बड़ा Spain are in रोमांचक front इतिहास, now. The game's जो only goal. अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का मैच Tagliafico हो रहा है फिलहाल। looking for options अभी for हाफ टाइम, movement. Not the most accurate pass. मतलब फिलहाल अभी हाफ टाइम हुआ है, मतलब थोड़ा देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। Nico ओ Williams. भाई साहब, Quick cut out, well played. क्या पास खेल रहा है भाई स्पेन। हाँ, रियल लाइफ में बहुत बढ़िया पास खेल रहा है स्पेन, ऐसा नहीं कि गंदा खेल रहा है भाई, He's स्पेन in a अच्छा great खेल रहा है भाई, position here. मतलब Has a हाँ look सच and में plays यार, it देखो forward. देखो 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 रे भाई, Martinez घुस breathes a जाता है sigh यहाँ of पे। relief as he gets his hands on the ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Lo Celso. Lo Celso. अरे अच्छा स्किल था ना, बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई यहाँ पे। ए He's had भाई fair मार देगा भाई command of तेरे that को, challenge. एक येलो कार्ड तो बनता है यार, Whistle's रेड gone मत for a दिखाओ, येलो reckless challenge there. ओरिजिनल। And that's going to be a booking. हाँ सही है, येलो कहाँ गया भाई, येलो कहाँ गया बंदा यहाँ पे। चाहता तो रेड भी दे देता Just रेफरी, eases him off the बट ball. नहीं देगा भाई, Fernandez. ऐसा नहीं है कि दे देगा भाई, नहीं We're देगा। halfway through extra time. तो आप लोग Lively कहाँ से all मेरा this लाइव स्ट्रीम time. The वॉच आउट first कर रहे telling हो, moment. एक छोटा सा 15 कमेंट minutes करो भाई, separate it from कहाँ से being मुझे देख the रहे हो ना winning भाई, moment. कौन सा जगह से देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो कि इंडिया के And बाहर we're से off देख रहे हो for ना, the एक final कमेंट time. करो भाई, They ये have आपका played एक कमेंट में themselves to बहुत a पावर near है भाई। standstill. What is left in the tank कमेंट now? करो भाई, यहाँ पे कमेंट नहीं करोगे ना Oh, भाई that pass साहब, just didn't quite work. तो कुछ नहीं होगा भाई। ऐसा नहीं कि कमेंट Cucurella. नहीं करोगे कि सब हो And जाएगा, Kubasi. कमेंट करो तो Rodri. होगा ना भाई, कमेंट करना Shuffled it to चाहिए the उसके flank. लिए। Now it's Williams. He's अरे worked his भाई way ये भी through. फंसा, अबे निको विलियम क्या Nico बॉल टान Williams. रहे हैं बे, Towering header. It's loose now भाई and they want to get it साहब back. देने ही वाला था और And एक now they गोल। can clear their lines. अरे This could हाफ be टाइम it. हो गया है क्या, Something close to a अभी minor तक miracle. हाफ टाइम Yeah, भी it's नहीं not looking हुआ good, क्या। Peter. Never say never, अरे though. भाई हाफ टाइम तो होना चाहिए। And that interception was अरे most इतना गंदा necessary. पास खेल रहा That's भाई great लेजेंड positioning. में। So good from him. Martinez. हाँ That बॉल gets us मार्टिनेज past. अच्छा छोड़ा, बट Ferran Torres. चल चल चल। Threads one in. Now it's Simeone. Looking for the run. अरे दौड़ Oh, नहीं that's a पाएगा good वो, one. I think we're about to see a frenetic क्या finish. टच खेल रहा है No half स्पेन भाई, measures from here. बच गया, बच गया भाई। That is a jarring tackle, but apparently चल nothing दौड़ wrong भाई with it. दौड़। And he welcomes it in. अरे यार Rodri defending his corner कितना stubbornly. मुश्किल से Stuck मार really रहा well हूँ to भाई। his man. I'm struggling to work out whether that was अरे good भाई or a bit साहब stupid. क्या Both both यार, actually. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That is lovely. हाँ And there goes खेल the final खत्म, whistle. अर्जेंटीना का खेल यहाँ पे Defeated, खत्म हो गया भाई, dejected, deflated. The बुझ ultimate गया disappointment. अर्जेंटीना। मुझे माफ़ करना भाई अर्जेंटीना फ़ैन लोग यहाँ पे, माफ़ कर देना भाई, गलती हो गया मेरा, मैनू माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो भाई। आप लोगों का टीम को मैं यहाँ पे जिता नहीं पाया, हरा दिया भाई, गेम में हरा दिया भाई। रियल लाइफ में अभी भी जिंदा है मेसी ना भाई, वहाँ पे मैच पे है ना, डरने की बात नहीं। मैच स्टार्ट करने से पहले ना मतलब मैच शुरू होने से पहले कुछ बातचीत तो होना चाहिए। कैसा बातचीत होना चाहिए, पहला बातचीत जो मैं गेम खेल रहा हूँ ना, ए ई फुटबॉल गेम है। हाँ बचपन में खेलता था ना हर बंदा, पेस, विंग 11, कोनामी। हाँ कोनामी का अभी भी है, कोनामी का ऐसा नहीं कि फीफा ये क्या हो गया, ई फुटबॉल का ही है कोनामी। तो अभी जो गेम खेल रहा हूँ मैं, पीसी पर्सन गेम खेल रहा हूँ, कंसोल में खेलना
चाहिए था, बट पीसी में खेल रहा हूँ, कंसोल तो नहीं है, इसलिए पीसी में खेल रहा हूँ। तो पीसी में चल जाता है, अच्छा चल जाता है और मेरे को अच्छा लगता है। बट ये वाला गेम दोनों जगह आप खेल सकते हो, एक मोबाइल में खेल सकते हो, पीसी में खेल सकते हो। पीसी मतलब दैट्स मीन प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स वगैरह वगैरह, ये सब सीरीज़ में आप खेल सकते हो भाई। मतलब वही सीरीज़ का गेम हम पीसी में खेलते हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, बैटलफील्ड, वुकॉन्ग, ट्रिपल ए गेम जैसे RDR 2, राइट, GTA 5। तो ट्रिपल ए गेम नहीं से कह सकता, बट हो सकता है डबल ए गेम हो सकता है। GTA 5, GTA 6 हो जाएगा ट्रिपल ए गेम, फुल ट्रिपल ए गेम है भाई। रॉकस्टार का नया गेम GTA 6 लॉन्च होने वाला है, डेट तो सभी को पता ही है भाई, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जाके चेक कर सकते हो आप लोग। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ चेक करना है, वो चीज़ क्या है जो चेक करना है, मुझे ये चीज़ चेक करना है, ये देखो। पिक एक शूट कर लेता हूँ, जब जब लॉगिन कर दिया ना भाई, शॉट तो लेना चाहिए, एक शॉट तो लेना चाहिए भाई। लॉगिन जब कर दिया, छोटे सा स्मॉल करके शॉट ले लेता हूँ। अरे भाई क्या गोल मारा रे तू, तू से ग्रेड हो, तू से ग्रेड हो। कुछ नहीं होगा यहाँ से, कुछ मिलेगा नहीं। वैसे वैसे मिला तो बहुत कुछ चाहिए था, बट मिलेगा कुछ नहीं है यहाँ पे, बेकार है सब। ऐसा है, ऐसा बेकार 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 है, बेकार है भाई। भाई और अर्जेंटीना फैन लोग भाई, मुझे माफ़ कर देना भाई, मैंने हरा दिया आपका टीम को। हाँ, रियल लाइफ में भी भाई, मैंने बोला भविष्यवाणी में बोला कि अर्जेंटीना जीत जाएगा भाई। अब देखेंगे क्या होता है, क्या कहते हो, देखेंगे ना। मैच अभी बाकी है, मेसी अभी बाकी है, तो अर्जेंटीना जीतने का मौका भी बहुत ज़्यादा है। फाइनल मैच हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, मतलब फीफा का फाइनल मैच है, और सीज़न 26, मतलब 2026 है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला फीफा वर्ल्ड कप मैच होने वाला है 2030 में, जो कि बहुत बहुत रोमांचक होगा सफ़र हो। बट इस सफ़र में, उस सफ़र में मेसी नहीं रहेगा, और इस सफ़र में मेसी का लास्ट मैच है आज, कम, जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा है, 11 वर्सेस मेसी, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। तो दैट्स मीन मेसी का आज लास्ट मैच है भाई। हर बंदा मेसी को देखना चाहता है, मेसी का गेम प्ले देखना चाहता है, लास्ट मैच में कैसा खेलता है मेसी, प्रदर्शन कैसा करता है, मतलब कैसा खेलेगा बंदा, कितना स्किल दिखाएगा, कितना ड्रिबल करेगा, कितना मैन को टच करेगा, गोल मारेगा, असिस्ट करेगा, सब कुछ देखना चाहता है आज का। मतलब जितने सारे मेसी का भक्त है, भक्त छोड़ के भी फुटबॉल लवर लोग हैं ना, सब लोग मेसी का गेम प्ले आज देखना चाहते हैं, क्योंकि मेसी का आज लास्ट मैच है भाई। हम लोग का जनरेशन का गॉड का लास्ट मैच है, इसका बाद सब खत्म, हम भी खत्म, तुम भी खत्म, लाइफ स्ट्रीम भी खत्म। हाँ, एक चीज़ जिंदा रहेगा भाई, वो नेमार है भाई, नेमार रहेगा 2030 तक, हम लोग का लास्ट उम्मीद, आखिरी सांस तक। तो आज का मैच कौन जीतने वाला है, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई। क्या आप यहाँ पे, मैं कमेंट बॉक्स पे एक प्रेडिक्शन डाल के रखा हूँ, आप लोग प्रेडिक्शन पे आओ, अपना मनपसंद प्रेडिक्शन कमेंट करो, और 100 लाइक कंप्लीट करा दो भाई। इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, इंडिया से देख रहा हूँ ना भाई, इंडिया होके इंडिया का सपोर्ट करना सीखो भाई, बांग्लादेश में देख के जाके ना कुछ सीखो भाई, वहाँ पे भाई कुछ नहीं कहना है मेरे को, कुछ नहीं करा। अब मैं क्या कहूँ, कि मैं इंडिया में मतलब पैदा हो क्या, क्या मेरा गलती हो गया, या फिर मेरा नसीब का गलती है कि मैं इंडिया में पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरा नसीब भी अच्छा है, और मैं भी अच्छा हूँ कि इंडिया में पैदा हुआ हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं सनातन इंडिया हूँ। और दूसरा बात है कि भाई सपोर्ट नहीं मिल रहा यहाँ पे, पॉलिटिक्स के कारण सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब इंसान का आदमी का मन में पॉलिटिक्स मतलब गुज के रहा है, कुछ भी कहो भाई, अच्छा नहीं है, कचड़ा लगता है भाई। अब सपोर्ट करना चाहिए भाई, आगे आदमी को ना आगे जाना देना चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश में देखो भाई, एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर की भाई 1 मिलियन व्यूज से भी ज़्यादा है भाई, सब्सक्राइबर तो छोड़ ही दो भाई, 100 के 200 के ऊपर भाई, गेमिंग आईडी में देख लेना भाई, बांग्लादेश के लोगों का गेमिंग चैनल जाकर चेक कर ला। और अगर आप लोग ना इंडिया से गेम देख रहे हो ना यार, इंडिया का हो ना भाई, हिंदी में है, पहला बात तो भाई हिंदी में इतना लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, अच्छा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है शायद भाई, समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश करूँगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझा दूँ।
तो अर्जेंटीना का मैच शुरू होने वाला है। हाफ टाइम ख़त्म हो गया और हाफ टाइम का ब्रेक भी ख़त्म हो गया। तो हाफ टाइम के बाद सब लोग मैदान में उतरेगा, हम भी उतरेंगे। आप भी उतरोगे क्या? अगर आपको उतरना है तो मैदान में कमेंट करो भाई यहाँ पे। कुछ फ्री वाला स्पिन विन वगैरह आया है यहाँ पे, चेक कर ले तो क्या स्पिन में आया है भाई। 100 तो गोल्ड पहले ही डाला था भाई। 100 गोल्ड डाल के ना मैं यहाँ पे फंस गया भाई। पहला बात, लुइस सुआरेज, लुइस सुआरेज तो नहीं फंसेगा भाई। जो बंदा यहाँ पे मैं एक श्योर दे सकता हूँ, ई फुटबॉल जो भी खेलो भाई, मोबाइल खेलो कि पीसी में खेलो, कुछ भी खेलो, कहाँ भी खेलो, जहाँ भी खेलो, वहाँ भी खेलो, कुछ भी खेलो, ई फुटबॉल मोबाइल खेलो कि ई फुटबॉल पीसी खेलो, आप एक चीज़ करना यहाँ पे देख सकते हो। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये जो पैक दिख रहा है ना भाई, 5 आवर दिख रहा है, 5 घंटा, 5 घंटा ख़त्म होने में टाइम है इसका। तो आप लोगों में से किसी के पास 1800 कॉइन है, 1800 गोल्ड है, तो 900 900 करके ना दोनों मारो भाई। 900 900 करके दोनों मारो, दोनों में से तो एक ही बंदा फंसेगा भाई यहाँ पे। ऐसा नहीं कि नहीं फंसेगा भाई, 100% श्योर, मैं गारंटी देता हूँ फंस जाएगा भाई यहाँ पे। मेरा गारंटी है, मेरा गारंटी है। मैं कोई ई फुटबॉल का क्रिएटर व कोरियोग्राफर कुछ नहीं हूँ, बट मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, और जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ आप सभी को एंटरटेनमेंट करने के लिए और खुद को भी एंटरटेनमेंट में रखने के लिए भाई। ज़िंदगी में रखना चाहिए ना, कमेंट करके बताओ भाई। ज़रूर रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए यार, हर कोई रख रहा है, कैरियर भी रखता है, मैं भी रखूँगा, आप भी रखोगे, आइसो स्पीड भी रखता है भाई। और सबसे बड़ा बात है भाई, हाँ, 2030 तक क्या मैं भाई प्रोफेशनल यूट्यूबर बन जाऊँगा? मुझे नहीं पता भाई। अगर बन जाऊँगा ना तब जाके मैं ये वाला लाइव स्ट्रीम आके चेक करूँगा। अगर बन गया तो प्रोफेशनल, उम्मीद है, मेरा कोशिश करूँगा। आप लोग भी सपोर्ट करो भाई, ठीक है? और अगर आप लोग मेरा यूट्यूब लाइव का जर्नी का ब्लॉग देखना चाहते हो तो जाके मेरा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, वहाँ पे आपको डेली लाइव स्टोरी का ब्लॉग मिल जाएगा, ठीक है? और जो जो बंदा स्पेशली बंगाली में हो, বাংলা জানতে हो, তোমরা গিয়ে বাংলায় ব্লগটা চেক করতে পারো আমার ইনস্টাগ্রাম পেজে। তোমরা আমার ডেইলি জীবন কাহিনী, ব্লগ স্টোরি পেয়ে যাবে। তাও আবার সেটা মানে প্রফেশনাল গেমিং লাইফের জার্নির ব্যাপারে, মানে যেটা আমার ইউটিউবে চলছে, ইউটিউবের সাথে রিলেটেড, তাই জন্য তোমাদেরকে আমি এটা বলে দিলাম। তোমরা গিয়ে চেক করতে पारो। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं तो बता दिया। दूसरा कुछ बताऊंगा क्या टिप्स, छोटा सा टिप्स दे देता हूँ। छोटा सा ई फुटबॉल लोगों के लिए छोटा सा टिप्स यहाँ पे दे देता हूँ। मैच स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम तक मैं बक बक कर लिया आप सभी से। माफ़ कर देना मेरे को, इतना बक बक कर लिया। इतना बक बक करने के लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना भाई। हाँ, थोड़ा सा भी, ज़्यादा भी, कुछ भी, जैसा आपका मर्जी वैसे टाइप के माफ़ कर देना भाई। माफ़ी के लिए तो माफ़ी चाहिए, और माफ़ी के लिए उम्मीद भी चाहिए। उम्मीद के लिए माफ़ी नहीं चाहिए, माफ़ी के लिए उम्मीद नहीं चाहिए। कुछ भी चाहिए। क्या करूँ यहाँ पे, स्पिन वगैरह कुछ करना है क्या? ओवर रेटिंग भाई, ये बंदा को नहीं खरीद सकता। इसको लेना है भाई यहाँ पे, ये कलुआ को ले लेता हूँ, क्या कहता हूँ? कलुआ आजा, तू आजा कलुआ। कलुआ आ गया मेरे टीम पे, देख लो गाइस, ये देखा, आ गया ना गलुआ मेरे टीम पे। कैसा लग रहा है गलुआ को? अच्छा लग रहा है ना गलुआ देख के? आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैच स्टार्ट होने में और 2 मिनट बाकी है भाई। यहाँ पे नोवार का कार्ड दिया है क्या? जर्मनी का बैग आया भाई यहाँ पे। चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन बंदा है, कौन कौन प्लेयर है भाई। एक बार चेक करना चाहिए ना मेरे को ना भाई। क्या क्या थे वो आप लोग, ज़रूर चाहिए चेक करना। क्यों नहीं चेक करोगे आप लोग? चेक करना चाहिए यहाँ पे। ये देखो भाई, मेरा तो 0-0, सब कुछ 0-0, किसी को नहीं ले सकता यहाँ पे। तो मेरा देखना ही बेकार है। क्यों देखूँ जब नहीं ले सकता? तो देखना ही बेकार है, नहीं देखना चाहिए भाई। यहाँ पे देखता हूँ कौन सा बंदा है भाई। देखता हूँ, ओडीगार्ड है शायद यहाँ पे। हाँ, ओडीगार्ड को दिया भाई, ये ओडीगार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है भाई, बहुत अच्छा खेला। और फ्रैंकी डिजोंग भी अच्छा खेला। दोनों भाई भाई है देखो, मतलब सेम टू सेम, दिखने में सेम टू सेम है भाई, ओडीगार्ड और
यहाँ पे फैंकरी चौंग। तो मुझे किसी को नहीं लेना है, बिकॉज मेरे पास तो भाई पॉइंट्स नहीं है। मतलब ये पॉइंट्स रहना चाहिए ना, पॉइंट्स रहेगा तभी जाके ना मैं ले पाऊंगा ना। पॉइंट्स नहीं है तो कहाँ से लूंगा भाई? ऐसे नहीं ले सकता भाई, ऐसे कैसे कैसे, ऐसे कैसे यार? इतना टाइम हो गया भाई, 100 लाइक कब बोला था कंप्लीट कराने के लिए? का हर बंदा आ रहा है भाई, इतना मतलब क्या बोलता है भाई उसको, कंजूस हो गया है ये इंडिया लोग। इंडियन के लोग इतना कंजूस हो गया क्या भाई? एक छोटा सा लाइक नहीं कर सकते हो, कमेंट नहीं करने बोल रहा हूँ, लाइक का बटन है, लाइक करोगे पैसा नहीं लगेगा आपको, आपका अकाउंट से पैसा भी ना डिपॉजिट या फिर कुछ नहीं होगा, मतलब कटेगा नहीं, कट बट कुछ नहीं होगा। एक लाइक का बटन दबा दोगे तो कुछ नहीं होगा, दूसरे का घर बस जाएगा और उस घर से बहुत सारा उम्मीद भी पैदा हो जाएगा भाई। जिस उम्मीद को पैदा होना चाहिए हर इंडियन के अंदर, दिल के अंदर। अभी भी इंडिया में बहुत जगह लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री से या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म से कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो ये उम्मीद को तोड़ना चाहिए ना, किसको तोड़ना चाहिए? हम सबको तोड़ना चाहिए भाई। जो लोग अभी हम लोग मेहनत करते हैं भाई, क्रिएटर लाइफ में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लाइफ में, जो जो बंदा उतरना चाहते हो, अभी तक उतरा नहीं इन्फ्लुएंसर मार्केट में, मैं तो उतरा नहीं, आप लोग उतर गए शायद। तो आप लोग को लिए यही कह रहा हूँ, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करोगे तो ना जाके सपोर्ट मिलेगा भाई। इंडिया को नेक्स्ट लेवल गेमिंग में लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है यार? लेके जाना है ना तो 100 लाइक कंप्लीट करा दो भाई, दिखा दो पावर भाई सोशल मीडिया का। मुझे पता है भाई मेरा वायरल होने में भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग चाहोगे ना अभी वायरल कर दोगे भाई। अभी के अभी कल सुबह नींद से उठ के देखूंगा भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर, शौक हो जाऊंगा भाई, ऐसा शौक लगेगा कि शौक के कारण ना भाई हार्ट अटैक खत्म। मतलब ऐसा वायरल होने का भी क्या फ़ायदा, जो न्यूज़ सुन के सुबह सुबह ही कट जाऊंगा ऊपर। भगवान का पास, वो भोले बाबा बोला था ना, भोले बाबा के पास दर्शन ले लूंगा, परमानेंट दर्शन हो जाएगा मेरा। न्यूज़ ऐसा हो जाएगा तो देखूंगा, कोशिश करूंगा होने के लिए, तो भाई मेहनत कर रहा हूँ ना। अभी हो जाएगा तो भाई मेहनत भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मुझे मैच स्टार्ट करना है भाई, बहुत देर तक आप लोगों से बात हो गया भाई, मैच तो स्टार्ट करना है भाई। मैच स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पे मेरे को। तो मैच स्टार्ट करने से पहले मैं पूछ लूँगा, 45 मिनट का मैच कौन कौन फुल देखा? कमेंट करके बताओ भाई, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का 45 मिनट का मैच जो हुआ फर्स्ट आपका, कौन कौन देखा फुल? अभी सेकेंड अगेन आपका मैच भी स्टार्ट हो गया भाई। चलो, सेकेंड हाफ का मैच भी स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे दोस्तों सेकेंड हाफ शुरू हो गया और यहाँ पे स्पेन का टीम आ गया भाई, देख सकते हो यहाँ पे स्टेडियम में एंटर कर रहे हैं ये लोग। अभी अर्जेंटीना भी आने वाले हैं यहाँ पे। ये देखो अर्जेंटीना, मेसी सबसे पहले मेसी है। मेसी को ही फोकस लेगा कैमरा, क्योंकि बड़ा प्लेयर है ना मेसी, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे प्लेयर है भाई। 10-15 साल से खेल रहा है वर्ल्ड कप, और 15 साल में एक ही बार वर्ल्ड कप लिया है मेसी। और इस बार ले लेगा तो भाई 2 बार हो जाएगा, लेना चाहिए भाई, लेना चाहिए मेसी को वर्ल्ड कप। क्या कहते हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, टीम मीटिंग चल रहा है, स्पेन बोल रहा है भाई ठोक देंगे अर्जेंटीना को, और अर्जेंटीना मेसी तो बोल रहा है भाई हम लोग किस लिए आए, कप के लिए आए, कप लेके जाएंगे। मार्टिनेज बोलता है हाँ सही बोला मेसी तूने, बोले ये लास्ट की उम्मीद लेना तो पड़ेगा, और इस साल लेके ही जाएंगे भाई। ये उम्मीद कब कब आएगा क्या पता, अभी आया Well, है this तो really is अभी quite कंप्लीट uplifting. करेंगे। There is so यही much to डिस्कस हो रहा है इन लोगों appreciate के all अंदर। around this तो मैच स्टार्ट हो गया हम लोग football. का, This is आप लोग where देख सकते हो भाई। every बहुत बहुत individual शुक्रिया, थैंक यू सो मच contributes, भाई brings मेरे लाइव स्ट्रीम so पे ज्वाइन much, करने के लिए। and the इतना शुक्रिया fans कोई नहीं puff out बोलेगा भाई, their chests मैं proudly. ही बोलूँगा। मतलब अभी नहीं कि वायरल हो गया, वायरल के The colours बाद भी vivid बोलूँगा and भाई, vibrant, so वायरल जब हो thrilling जाऊँगा the तब भी crowd. बोलूँगा, The tone for this अभी भी game बोलूँगा, is well and truly बोलते ही set. रहूँगा। जो बंदा लोग देख रहे हो ना भाई, उनको भी पता चलेगा ना भाई बंदा क्या क्या बोल रहा The है भाई। national anthem चलो, of अभी नेशनल एंथम Argentina स्टार्ट हो गया फिर has से हम लोगों का मैच का, मतलब गेमिंग मैच का, गेम का मैच है, वही नेशनल एंथम चल रहा है। चलो थैंक यू सो मच भाई। मैच का थोड़ा डिटेल्स पे ध्यान दो आप लोग, मतलब मैच का मज़ा लो, जो
सब सब कहना चाहिए था मेरे को। मैच का मज़ा लो, मैं भी मज़ा लेता हूँ। अब मज़ा में सज़ा ना हो जाए, यही यही बात है। Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, I'm Rick Laporte. He's a centre-back who's one of the best in the business when it comes to playing out from defence. He can spark quick counter-attacks or put his foot on the ball and retain it when a breather is needed. He's a very solid defender too. And opposition forwards, they're not going to get much change out of this guy. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. So off we go then. This then the greatest show on the grandest stage. Llorente. Llorente with the cross. Romero attempts a clearance. He's having a hit! Big relief, it just needed better contact. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Simeone. He's a sharp little ball here. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's hoisted clear. Kubasi. That has been slung wide. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Mikel Oyarzabal. Now it's Fabian Ruiz. Tagliafico. Perez. And Fernandez. It's a really well-measured ball. Messi going face-to-face with his great rival. And it's Messi. Oh, well measured. It's gone out for a throw-in. Nicely spread. And here's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. And it's been hooked away. Now it's Gavi. Good ball, good take. And here's Gavi. Oyarzabal. Shifted it to the flank. And that should get the job done. Argentina still without a single shot on target. Not the most accurate pass. Rodri. And it's Ruiz. Over to the right flank. Ah, he'd have done well to reach that. Lo Celso. Great defending, strong and determined. Gavi. Now it's Oyarzabal. Oyarzabal! And for a moment, time stood still. Not pretty, but it gets the job done. That's a throw. No, he wasn't being taken in by that trickery. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi.
That's a good ball out wide. Ferran Torres. Gavi! And he's there to clear it. He's having a pop! It's run loose. Who's going to... Oh, he's been caught on it here. And it's claimed by the keeper. Messi is the team's great visionary. Now it's Simeone. He's found a way through. Kubasi. Pedri. He's looking wide. Cucurella receives it in a wide position. Tagliafico. Lo Celso. Oh, good spread. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Pedri. And it's Ruiz. And here's Oyarzabal. He's got plenty of space out wide here. In by Llorente. And the keeper gets his hands on it. Gavi. Ferran Torres. Out towards the flank. Simeone. Perez. Now it's Messi. Now it's Gavi. And it's Pedri. Ferran Torres. Oh, well played, well played. Lofted upfield. The whistle's gone, and that's it for the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. How's the first half compared with your expectation? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. Cambio de jugadores en España. El dorsal 9 será So the action reemplazado por resumes. el dorsal 17. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Now it's Williams. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That is
this ended up in no man's land. Pedri, and here's Ferran Torres. And he's chosen to go back. Spread out to the left. Molina gets it away. Messi. Lo Celso. And it's Fernandez. Neither of these two want to come off second best. That's a... And the finish! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Crosses it in here. Martinez! It's gone in! He's put through his own net! That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just the way it is. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Spread it left. Williams. Threads one in. Now it's Ferran Torres. Spain really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Well, that pass isn't the best. Pedri. That's going wide left. And it's Cucurella. Pedri. He's had a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Fabian Ruiz. That's destined for the flank. Now, can they get him away? Now it's Pedri, played in. Bullish header! And he's stuck it away! Spain are all square! It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. El dorsal 21. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. And he's picked it up out wide. Serves... Oh, great leap! Now, who's going to be first to this? And that is well cleared. Spain are making a change now. Cambio de jugadores en España. El dorsal 7, el dorsal 8 serán sustituidos por el Ah, now dorsal here's a good 19, battle, bicep el to dorsal bicep. 6. Well, what about it? Argentina certainly weren't expecting this. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And he shoots! It's a goal!
But oh, it's offside. Well, I think he knew, Peter, the way he sheepishly looked across. A moment's uncertainty there, but it is the right call. Ball's gone out of play. Now it's Lo Celso, looking for the run. No messing about, just bludgeoned away. Fernandez. Rapidly approaching. Oh, he's going to be pulled back for that one. No second thought, a straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Rodri. For Merino. Oyarzabal is onto this. Tries to pass it through. And he welcomes it in. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Argentina could not have chosen a worse moment. Yellow or red, it is red. Well, they are now a 9-man team. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. And they've turned it round. Not a twitch, not a blink. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. Marcó en el minuto 83 el dorsal 16. Spain with the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. He's in a great position here. Oh, he's in one-on-one. Oh, that's a foul in a dangerous area. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, no question, Jim, the referee has seen that as a professional foul. Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly. Oyarzabal! It's loose now and they want to get it back. Crunching tackle. He's been bundled over. That is a foul. Oh, that's a booking. Always looked it. Punched away. Great ball, and he's in here. Well, now it's a race for the ball. And that's played in low. And he's quick to get rid. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There's the header! And yes, it's there! And that should do it! Within sight of the finish line. He watched it all the way, and the finish was unearned. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused.
Checks on the touchline, a change about to occur. He got amongst the goals here, and now he takes his leave. It's good to see that, Peter. He put in a very good day's work, and you can't do a lot more. It's a well-deserved rest. Cambio de jugadores en España. El dorsal 21 será sustituido por And we're underway. So a clash of nations with so much pride on the line. Paz. Played out to the left flank. Rodri. And it's Laporte. Cucurella. Gavi is firing after that one. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Fabian Ruiz. Ferran Torres. Romero. Played through into space. He's in plenty of space here. Space for him to turn and look. Engages and forces him off the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pedri. It's a really well-measured ball. Now it's Ferran Torres. Great vision. Now it's Oyarzabal. And the shot! Molina gets it clear. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Now it's Martinez. Martinez. And Paz. And here's Messi. Aimed beyond the defence. That's gone all the way through to the keeper. Now it's Gavi. Cucurella. Fabian Ruiz. And that has been cut short. Simeone. Now it's Ferran Torres. And it's Pedri. Nicely spread. Fabian Ruiz. Perez clears it away. Oyarzabal is fouled. Well, that looks like a final warning, still no card. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Oyarzabal! Not a bad try by any means. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Molina. Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Now, what about a counter-attack? That's going wide left. Now, that looks a decent ball. Fernandez. Romero. And it's Molina. To Messi. Nicely shaped ball. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Easy enough for the goalkeeper. Romero. Lo Celso. A quick look, thought about cutting inside. And that is headed for the middle. Laporte clears without hesitation. And it's Fernandez. Well seen, saw that coming. That was well played.
well stopped. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Lo Celso. Perez. Fernandez. Taliafico. Simeone. It's out for a goal kick. And a chance! Goal! Argentina! And it's Argentina in front. And that is a genuine ground-eat-me-up moment. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. Minuto 38, el dorsal 11. So we have had the first significant moment. It is 1-0. And it's Gavi. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Rodri. Argentina leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Knocks it into space. And he's there to belt it away. Oh, there's a probing ball. No, it's come to nothing. And he's there to clear it. He leaps for it! And kept out by the most elastic of saves. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Nicely weighted ball. Molina gets into a good position. Pedri. Gavi. And he was quick to react. Messi. Pass somewhat off target. That's the end of the first 45. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Argentina come in leading by just the odd goal. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Argentina looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. Cambio de jugadores en España. El dorsal 9. Down to business again. El dorsal Argentina currently ahead by the smallest of margins. Laporte. Now it's Oyarzabal. Now it's Martinez. Oh, he's found support out wide. Llorente is there and he can get that clear. Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. No, he wasn't going to be fooled. Stood up well to him there. Nico Williams providing an outlet on that flank. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Pity that, because it had a decent chance of progressing. Taliafico. And Paz. Paz has it in a wide position. Lovely feet. Llorente did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on.
That's destined for the flank. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Molina defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Messi picks it up out wide. He's picked his way through. Well, he got rid because he was under pressure. And now they can spring out of defence. And he's intervened well there. That is good pressure, just hounded him off it. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? It's Ruiz. Now it's Oyarzabal. Now it's Ferran Torres. Now it's Oyarzabal. Oyarzabal has got himself a free kick. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Oyarzabal! It's loose and there's a race for the ball. Nearly, but not quite. Paz. And here's Oyarzabal. Molina. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Fabian Ruiz. Spread out to the left. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Lo Celso. And it's Fernandez. That has been slung wide. Fernandez. Just about up to 75 minutes. That's positional gold, the utilisation of space. That's just playing it safe and simple. A lot of space here, a real opportunity. He is through here. Pedri. Now this could be a chance. It's a promising position. Backward it goes. Goes for a shot! Brilliant from Williams! He's got himself an absolute peach. Spain are all square. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. So they have it all to do again. Well, this poses a very interesting question now, Peter. Do they push on to try and win it in normal time? They certainly have the momentum. Distributed tidily. Messi drives it in. And he gets rid in a hurry. And he's gone backward here. And here's Lautaro Martinez. Now that's well seen too. This is intriguing. Next goal critical.
Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Pinches it off him. Quick look, then plays it in. And it's safely in the keeper's hands. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And it's Pedri. And here's Oyarzabal. And that pass just didn't quite work. Now it's Simeone. This is the time you need that pace. Habrá 2 minutos de Looking descuento. for a runner. And this is Messi. Oh, that's fabulous. Cucurella attempts a clearance. They'll want to make the most of this turnover. Time added on will be 2 minutes. He's shifting through the gears here. So 90 minutes have come and gone. It's going to be extra time. So we are still gridlocked. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so mistakes are far more likely over the next 30 minutes. So a brief break, and then we will be back for more. Cambio de jugadores en España. El dorsal 7. 90 minutes gone and nothing between them still. Argentina pay the price for failing to close out the match in normal time. Can they avoid the same fate here, where the consequences are still more serious? Messi. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. He has a look out. Big chance! Oh no, that could be a costly miss. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. And that should get the job done. He is just caressing the ball. And he's picked it up out wide. And that's been drilled in. And that was very necessary. Simeone. Can he get it through? Argentina can break now. Looking to play him in. Can he get onto this? The muscular approach does pay off here. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Probably be looking to play it square from here. Cucurella. Fabian Ruiz. Now it's Williams. No, he refuses to take the bait. And that has earned a reprieve for the time being. Looking for options for movement. Nico Williams finding himself in space. Very nicely done. And it's played in. Tries to play it through. Oh, lovely feed. He is such a good mover. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. So just 15 minutes still to come. So nothing yet in extra time to make a difference. This, the final 15 minutes for someone to do something. And so the last chance to find a winner. This has been enthralling. So what do the last 15 minutes have left? That's the keeper's ball. Llorente.
Yamal. He's got away. Pretty robust defending. Little doubt, that is a foul. And that's going to be a booking. Players have gathered round and they are clearly concerned. And that gets things running. This then the greatest show on the grandest stage. Oh, some astute defending there. And it's Gavi. Cucurella. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. The pressing's intense and it's paid off. Martinez. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Simeone. Simeone was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Llorente. Delicate ball, and it needs to be. He's onside. That's good play. Now it's Llorente. Fabian Ruiz. Hangs in across. And he's taking no chances there. It's a good run he's making out on the left. Paz. That has not gone well. Fabian Ruiz. There's the crossfield ball. Gavi might just make this. It's a pretty loose pass. Perez. Can he get on the end of this? Pedri. Now it's Gavi. Well read, nice interception. Romero. And it's Molina. Lo Celso. Oh, the less said about that pass, the better. Pedri. Lovely pass, but can he get there? Tries to play it through. No, that's been intercepted. Romero threads one in. Now it's Messi. Now it's Simeone. Knocks it out wide. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Ferran Torres. Here's Llorente. Pedri. Ferran Torres. Now it's Oyarzabal. Gavi. Now it's Gavi. Lo Celso. Cucurella promptly onto that, and that is that. And it's Ruiz. Cucurella has the space to scheme. And it's been taken short. Chance to deliver. Perez is there, and he can get that clear. He's on it, can he get away? Caught offside that time. It's a crossfield ball towards the other flank. That's a great ball crossfield. Kubasi. That's good pressing, squeezing the play. Now it's Gavi. Now it's Oyarzabal. Looking to pass their way up the pitch. Oh, that is a nice touch.
Oyarzabal receives it in a good position here. Fernandez clears it away. Tagliafico. And Simeone. Lo Celso. It's a really well-measured ball. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Gavi. And he's managed to get free. So still we are where we began. It's 0-0. Cucurella. And here's Gavi. Now it's Fabian Ruiz. And it's played into the middle. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Messi. Simeone. Looking to play him in. That is lovely. And it's Fernandez. Mikel Oyarzabal. Played out towards the right wing. Spread neatly. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Kubasi. This is a promising build-up. He's looking wide. He has found the way through. Foul and a free kick in a very dangerous area. And he is going into that little black book. And he's there to clear it. And the referee says that is that for the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Some first half thoughts? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. That gets us going once more. Argentina really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Now it's Oyarzabal. Now it's Ferran Torres. Now it's Oyarzabal. Llorente. Now it's Ferran Torres. Now it's Llorente. Delivered low. That's going to go a long way. Tagliafico. Perez. Now Romero. Molina. And it's Molina. Messi. Pass is just off target. Simeone. Oh, that's nice. That's put play to the danger. He's had it taken off him. And that's a throw-in. Pedri. He's a sharp little ball here. Well, if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. Ferran Torres. Llorente. Rodri. He shifted it to the flank. And it's Cucurella. It's Pedri. Messi. Oh, now can they counter? Oh, now here's an interesting matchup. And it's made its way to him. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped.
Ferran Torres has it out wide and in space. And he's been shifted off it. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced... And Martinez! It's bounced back off the post. Here comes the... Oh, good climb! And he's cleared it out of harm's way. Paz. No, that was never going to make it. Llorente. And it's Rodri. Now Fabian Ruiz. Spread it left. Gavi in acres of space out wide. Fernandez. Over to the right flank. Messi. Rodri. Fabian Ruiz. Now it's Ferran Torres. And it's Pedri. That has been slung wide. And he's there to get it away. Spain really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Rodri does really well there. He is strong. Romero. Now it's Martinez. And he's in. Can he finish? And that has earned a few nods of approval from the bench. Not pretty, but it gets the job done. Drills one in. Unai Simon claims it. Safe hands. Spain are looking to go forward now. And here's Lautaro Martinez. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Cucurella. Rodri. That's a good ball out wide. Ferran Torres making good progress on the right-hand side. Oh, what has happened here? This looks promising. The referee has given a corner. Fabian Ruiz! No, he didn't quite meet it right. Fernandez. Pass somewhat off target. Oyarzabal. Shot a goal! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Well, I think the defence are probably going to come in for a rollicking after this, Peter. They got away with one there. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Paz. Tagliafico. Paz. That has not gone well. Llorente. Rodri. Fabian Ruiz. Some intricate passing, looking to progress the ball. So that means another 30 minutes football. So that was the second half.
Yeah, neither side has anything to show for some splendid effort, and they certainly aren't showing any signs of easing off, so we remain optimistic. So no winner at full time. We will be going the distance. Into extra time we go. And it's Gavi. He's in plenty of space here. And here's Gavi. Strokes it back. Great vision. He's having a shot! Deftly away. And that has fair fizzed. Keeper's dealt with that. Fernandez. And now a sudden chance to counter. Tagliafico. And Simeone. Well, that's beautifully weighted. Good ball, good take. Spread out to the left, Simeone, and that's gone loose. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Martinez is flagged offside. He's had it nicked away. Fabian Ruiz. Ferran Torres. And it's Rodri. It's Pedri. Fabian Ruiz. And here's Oyarzabal. Martinez. Llorente. Rodri. And it's Pedri. Played out wide. And here's Gavi. Plays it. Can he finish? And with that, it is half-time, extra time. Halfway through extra time, and still we are deadlocked. Is it time for a hero to step up and to grab the headlines here?
तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग भाई। मेरे स्ट्रीम पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे स्ट्रीम पे ज्वाइन होने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, और सभी को मेरे तरफ से बहुत 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 प्यार। अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का मैच में क्या होगा रिजल्ट किसी को कुछ पता नहीं, बट आई गेस अर्जेंटीना जीत जाए। सब लोग चाहते हैं कि अर्जेंटीना जीत जाए, तो आज रात इतना टाइम हो गया फिर से, तो फिर क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, स्पीचलेस हूँ भाई। इतना बंदा मेरे को एक साथ देख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है सच में यार। थैंक यू भाई, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग भाई। मेरे स्ट्रीम पे ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा मैं आपसे भी से बात बोलूँगा कि आप लोग मेरा लाइव स्ट्रीम कहाँ से देख रहे हो, एक कमेंट करके ज़रूर बताओ प्लीज़। कहाँ से आप लोग मेरा लाइव स्ट्रीम वॉच आउट कर रहे हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो ना, कमेंट ज़रूर करो प्लीज़ भाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आज के लिए अभी तो मैच ख़त्म नहीं हुआ, तो आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है, आज के लिए और भी है। तो कहीं मत जाइए, यहीं रहिए लाइव पे। मेरा लाइव अभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक मैच ख़त्म नहीं होगा मेरा लाइव स्ट्रीम भी ख़त्म नहीं होगा। मैं हूँ आप लोगों के साथ, अर्जेंटीना के साथ, मेसी के साथ। तो आज का कप मेसी के साथ लेके ही घर में जाऊँगा, मतलब घर में ही हूँ, घर में जाऊँगा मतलब क्या, सो जाऊँगा यार। चलो चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस लोग। Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? 105 minutes of deadlock, 15 minutes to break it. Pedri. Can he get on the end of this? And it's Ruiz. And Cucurella. Now it's Gavi. Rodri. Ferran Torres. He's got plenty of space out wide here. Forced to go back. And the shot! That's just playing it safe and simple. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Nice interception. His positioning was spot on. And here's Ferran Torres. He's found a way through. Now it's Martinez. Oh, good spread. Messi gets into a good position. And it's Molina. And it's made its way to him. Spread to the right. Oh, that's neat. Molina's cross. Laporte with the clearance. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. तो थैंक यू भाई लोग, बहन लोग, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार भाई। इतना टाइम तक मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पे बने रहने के लिए भाई, इतना प्यार देने के लिए मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक बार 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं दिखाऊंगा भाई कि आप लोगों ने मेरे को जितना प्यार दिया उसका रिटर्न प्यार मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, वो दिखाऊंगा मैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई, और 100 लाइक ना कंप्लीट करा दो भाई। इतना रात तक मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ भाई, मैच भी नहीं ख़त्म हो रहा है, मेरा लाइव स्ट्रीम भी नहीं ख़त्म हो रहा है भाई, आप सभी के लिए भाई, एंटरटेनमेंट करने के लिए आप सभी को भाई लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ इतना रात तक। तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना भाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और लाइव स्ट्रीम में मैं इतना बंदा है मेरे को एक साथ देख रहा हूँ, तो मैं एक साथ सभी बंदों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई कि वो आज का मैच मेसी जीतने वाला है भाई। चलो ठीक है।
So we're up and running. So a clash of nations with so much pride on the line. Simeone. Tagliafico. Here's Lo Celso. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Could move up a gear here. That's going wide left. Nice control. That's destined for the flank. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Tagliafico. Pass. Tries to pass it through. Well, that looks a decent ball. Tagliafico picks it up out wide. Defending of the desperate variety. Crosses it in. And he's cleared it back out. That's a throw. And that's another throw. Now it's Messi. Nicely weighted ball. Space for him to turn and look. Shot, surely! Llorente with the clearance. That's very neat. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Pedri. Mikel Oyarzabal. Gavi. Now it's Gavi. There's the shot! Oh, the ball's run loose here. That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Pedri goes short. And it's Rodri. And here's Ruiz. Cucurella. Shoots! A real chance and a real let-off. Romero. Fernandez. That is ended up in no man's land. Cucurella. And it's Pedri. Nicely spread. Tagliafico. Romero. Pedri does really well to win the ball there. Now it's Ferran Torres. Gavi. Fabian Ruiz. Gavi. Now it's Gavi. And he can thump it away. What a throw in. Rodri. Now it's Oyarzabal. And here's Gavi. Gavi gets flagged offside. Now it's Simeone. 15 minutes till half-time.
Gavi. Spain do have a chance to counter here. And that's very disappointing, it has to be said. Lo Celso, played out to the left flank. Now it's Simeone. Tagliafico. Only partially clear. Yep, it's a corner. And he's taking no chances there. Spain have the chance to go the other way. Ferran Torres. And it's Llorente. Now Fabian Ruiz. Passes coming off in quick succession here. Paz. Martinez. Just past the 40th minute mark. Now it's Fabian Ruiz. Rodri, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he gets rid in a hurry. Played out towards the right wing. So what can they make of this? Pedri. Gavi providing an outlet on that flank. And here's Ruiz. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Goes looking wide. And he's managed to get free. Well, that's pretty clear, it is a foul. He knew what was coming, that's a yellow card. And that should get the job done. And the whistle goes for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So neither side yet off the mark. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जो बंदा भाई ने मेरे को कमेंट किया, तरह सतीश टीके, तरह सतीश टीके, थैंक यू सो मच फॉर भाई मेरे स्ट्रीम पे आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको भाई। और कमेंट करने के लिए तो और भी शुक्रिया भाई, ऐसे ही सपोर्ट करो भाई। और आज का मैच कौन जीतेगा भाई, लाइव प्रेडिक्शन वाला पिन कमेंट का आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए सतीश टीके भाई। तो थैंक यू सतीश भाई, आपने कमेंट किया, मेरा लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश भाई। और चलो मैच का मज़ा लेते हम लोग, चलो सतीश भाई मिलके मैच देखते, चलो।
So let's get the ball rolling. 0-0, and we're at the halfway point. Distributed tidily. Ferran Torres. And it's Ruiz. Tries one from range. It's hit the upright. Oh, that wasn't the worst effort in the world. I think his reaction says everything there, Peter. Just a fraction inside. That's all he needed to be. Molina. Messi. Neither of these two want to come off second best. Fabian Ruiz. Over to the right flank. Out towards the flank. Knocks it into space. And that is out and behind. It's a good block. And now they can spring out of defence. Oh, nice touch. Now the ball in. Martinez deals with that nice and simple. Was that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Played into space. Ferran Torres receives it in a wide position. Now there's a fine ball. Shapes to shoot! That is decidedly lacking. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Perez. Lo Celso. Tagliafico. And Simeone. No outsmarting him this time. Ferran Torres. And he welcomes it in. Cleared without hesitation. And the break is on. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, good spread. That's a good ball out wide. Llorente has to go back here. Shot could be on. Pedri! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Perez. Paz. Tagliafico. Here's Lo Celso. Fernandez. It's a really well-measured ball. A quick look, thought about cutting inside. Gavi. They want to be quick here. It's breakaway time. And it's Gavi. He shifted it to the flank. Here's Rodri. Kubasi. Distributed tidily. Now, can they get him away? Oh, sweet feet. Now the cross. And that's the keeper's ball. Spain truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Over to the right flank. And it's Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Now it's Simeone. Tagliafico swings it across. And he's heaved it away. Pedri. Aims beyond the defence. And that is out of play.
Fabian Ruiz. Looking for options for movement. Gavi finds himself offside. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. And here's Gavi. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. Simeone. Now it's Simeone. Simeone, terrific effort! Oh, that could be pivotal! Has he won it? He just might have won it! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Argentina now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? The ball goes in. Spain really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Habrá 2 minutos de descuento. Looking for the run. Well, nicely intercepted. Laporte. Passing is crisp and sharp. And it's Pedri. And that is it. The referee has seen enough. Argentina can celebrate now. They have exactly what they craved. How do you look back on the game then, Jim? Argentina really deserve a lot of credit for what I'm sure would be a real confidence-boosting win. Such a huge game being played. There were so many factors that would have got the doubters going, but I guess they'll all go a little quiet now. Recordamos a nuestros espectadores que el estadio dispone de una sala de objetos perdidos que permanecerá abierta entre semana en horario de oficina.
Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. The national anthem of Argentina rings out. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, there's no doubt as to who the creative hub in the side is. It's Mikel Oyarzabal. He boasts some of the most impressive records when it comes to goals and assists, Peter, helped by the fact that he can play anywhere across that front line, and also he has a real willingness to run beyond the strikers. And there's a lot to admire about this guy. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. There's the whistle. So a clash of nations with so much pride on the line. Great ball, and he's in here. No way through, so back it comes. Ferran Torres. Ferran Torres was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Llorente. Laporte. And it's Gavi. It's Pedri. Now it's Gavi. And it's Ruiz. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Fernandez. Now it's Messi. Crunching tackle. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. He's picked his way through, and he's cut it out. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Gavi, and he's managed to get free. Patience, the overwhelming virtue in this game so far. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. No outsmarting him this time. Laporte. It's Gavi. Pedri. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Lo Celso. Spread out to the left. It's a goal kick. Rodri. Gavi. Space for him to turn and look. Oh, that's fabulous. Cucurella crosses. And he's taking no chances there. Llorente in acres of space out wide. Llorente. Out of play for a goal kick. Romero. Lo Celso.
Fabian Ruiz. And here's Oyarzabal. Pedri receives it in a good position here. And who's got the final touch there? Goal kick's been given. Romero. And it's Fernandez. Now it's Simeone. Looking for options for movement. He's in a great position here. Well, he got rid because he was under pressure. He's got plenty of space out wide here. Chance to deliver. Cleared away. Paz. Spread it left. Now the delivery. Punched away. And that'll be a goal kick. Kubasi. Here's Llorente. Ferran Torres. Pedri. That has been slung wide. And it's Ruiz. And here's Oyarzabal. Oyarzabal! That is brilliant from Mikel Oyarzabal! About as smooth as it gets. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Spain have penetrated for the first time. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Perez with a fine tackle. Pedri plays it short. Gavi delivers the ball. Tries to get it clear. Cross needs to be good. Well played and well cleared. Paz. There's the crossfield ball. Now it's Simeone. Tagliafico. And no, he's seen through all of that. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Now that's well seen too. Simeone. Now it's Martinez. Fabian Ruiz. It's a decent chance to counter-attack. He's having a hit! Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. Yeah, he's disappointed with himself, but The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Argentina trailing by the tightest of margins at half-time. well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Back on the way then. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Now it's Martinez. Nicely spread. No, not quite on the same wavelength. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less.
Ferran Torres. He is through here. Cross from Ferran Torres. Llorente has it out wide and in space. Molina is there and he can get that clear. He shifted it to the flank. Ferran Torres running with intent. He's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Tagliafico. Now it's Simeone. Now it's Lo Celso. Pau Kubasi producing a good steal there, showing a good level of alertness. And he's being shifted off it. And it's Messi. Pressure coming in from all directions. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Pedri. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Tries to thread one through. Ah, he'd have done well to reach that. Spain can now introduce the first of their substitutes. And the break in play means they can now affect their change. Yeah, they've gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. Será reemplazado por el dorsal 19. Romero. Messi. Oh, good spread. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And they are prompt with their pressing. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Rodri. And it's Gavi. It's Gavi. And it's Cucurella. And it's Ruiz. Can he get on the end of this? And that's a simple one for the keeper. Messi is always scanning the pitch for targets. Fabian Ruiz distributed tidily. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And it's made its way to him. Gavi. Pass somewhat off target. That's a good ball out wide. Now it's Lo Celso. Looking for the run. Now it's Lo Celso. And here comes the corner. Cambio de jugadores en España. El dorsal So now we're 9, going to get those changes we have been expecting. serán sustituidos por el dorsal 17, el dorsal 26. Fernandez! And he's really put himself on the line here. And that should get the job done. Tries to dink it through. Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. Well, there's the clearance. And it's Messi. Messi. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. Can he finish?
Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Now it's Simeone. Now this could be a chance. Oh, that's superb. Messi, and the shot! Oh, and the keeper couldn't hold it. Oh, and that is really good tenacity. Unai Simon gets his hands on it, and the danger is averted. And now they can spring out of defence. Two minutes to be added on. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. And that is as far as it goes. Argentina are beaten, and they are out. Your reflections then, Jim? Argentina really looked like they were just second to everything, disjointed even. Yeah, it was a high-intensity game, and that may have gotten to some of the players, but even so, it was just disappointing on a lot of levels. Recordamos a nuestros espectadores que en la tienda oficial del estadio podrán encontrar todo tipo de objetos relacionados con nuestro equipo.
तो जैसे कि मेरे भाई लोग और बहन लोग, भाई मैच खत्म हो गया। अभी मैच का रिजल्ट भाई, स्पेन 1 और अर्जेंटीना 0। तो इसका मतलब स्पेन 2026 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया भाई। अर्जेंटीना हार गया भाई। बहुत दुख हो रहा है मेसी के लिए, बहुत दुख हो रहा है अर्जेंटीना के लिए। मतलब कुछ कहना बाकी नहीं है मेरा। मतलब स्पीचलेस हो गया मैं भाई, स्पीचलेस हो गया। अब मुझे पता है भाई, सब अर्जेंटीना फैन लोगों का भी बहुत खराब हालत है भाई। समझ सकता हूँ भाई, बट कोशिश किया भाई अर्जेंटीना। मेसी बहुत कोशिश किया भाई। मेसी लास्ट तक देखा मैच में, बहुत ट्राई किया भाई, बट क्या किस्मत खराब था भाई अर्जेंटीना का भाई। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई। मेरा लाइव स्ट्रीम पे सभी को बहुत बहुत शुक्रिया भाई ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, एक छोटा सा कमेंट प्लीज़ कर दो भाई। मतलब सुबह का 4 बजने जा रहा है, अभी तक लाइव स्ट्रीम चालू है मेरा भाई, सिर्फ आप लोगों के लिए भाई। अर्जेंटीना हार गया भाई, बहुत दुख हो रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो भाई, गोल खा गया भाई अर्जेंटीना भाई। स्पेन जीत गया भाई। 2026 वर्ल्ड कप स्पेन जीत गया, और इस साल स्पेन कप लेके टोटल 2 साल कप ले लिया स्पेन। 2010 में एक कप लिया था स्पेन, विश्व कप। और 2026 में ले रहा है स्पेन विश्व कप। आज बहुत अच्छा खेला मेसी, बहुत अच्छा खेला। कुछ नहीं कर सकता था भाई यहाँ पे, कुछ नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था भाई, कुछ नहीं हो सकता था। मिस्टेक हो गया। एंड थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अभी तक मैच ख़त्म हो गया अर्जेंटीना का, बट अभी तक भाई यूट्यूब में लोग गेम प्ले देखना चाहते हैं, मतलब मैच देखना चाहते हैं भाई अर्जेंटीना का क्या रिजल्ट है भाई। तो आप सभी को मैं यही कहूँगा भाई, अर्जेंटीना हार गया भाई, 1-0 गोल से हार गया। अच्छा खेला भाई, ऐसा नहीं कि 2-3 गोल खा गया, 4-5 गोल खा गया भाई, एक एक गोल खाया, वो भी हेड, वो भी हेड में। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया भाई। गोलकीपर समझ नहीं पाया, क्या करेगा भाई, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता भाई वहाँ पे। आप क्या करते भाई, कुछ नहीं कर सकते थे भाई आप। मैं सिर्फ यही कहूँगा भाई, अर्जेंटीना, हर अर्जेंटीना फैन को यही कहूँगा भाई मैं, भाई मुझे मुझे पता है भाई आप लोगों को खराब लग रहा है भाई, मुझे भी खराब लग रहा है भाई। मुझे लगा था भाई मेसी जीत जाएगा, जीता नहीं भाई। बहुत खराब लग रहा है भाई, सच सच कहूँ तो इतना खराब लग रहा है। अभी भी मेरे को, मतलब अभी भी मेरा लाइव लाइव में अभी भी मेरा लाइव में कितना बंदा देख रहा है मेरे को, लाइव देख रहा हूँ, लाइव काम कर लेता हूँ भाई। अभी भी मेरे लाइव में 100 बंदा है भाई, 100 बंदा का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है भाई आप लोगों को बहुत दुख हो रहा है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। फीफा ने भी कोशिश किया था, और रेफरी ने भी बहुत कोशिश किया कि मेसी जीत जाए, बट स्पेन बोल दिया कि कप तो हम लोग ही लेके जाएंगे भाई, इसलिए नहीं छोड़ा भाई। मुश्किल से, मतलब मुश्किल से अर्जेंटीना पहुंचा था फाइनल पे, सोचा था जीत जाएगा, कप लेके हो जाएगा 4 साल। तो इस साल कप ले लेता ना अर्जेंटीना, तो 4 साल हो जाता अर्जेंटीना का, बट नहीं ले पाया भाई, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा मैच है बहुत, मतलब फाइनल मैच हो तो ऐसा होना चाहिए ना, फाइनल मैच हो तो ऐसा होना चाहिए कि देखे मज़ा आ जाए भाई। आदमी लोग सोचे क्या, ऐसा मैच इतिहास में दूसरी कब देखेगा, मिलेगा, देखने को मौका मिलेगा, क्या पता भाई, नहीं पता किसी को। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ। तो अभी मेरे को 158 बंदा
टोटल दिख रहा है, मतलब अभी तक मेरे को 191, मैंने अभी अभी दिखा रहा है 191, 275 वॉचिंग दिखा रहा है। ओ माय गॉड, अभी भी लाइव में आ गया भाई 200 बंदा एक साथ। तो भाई 200 बंदा एक साथ देख रहे हो, लाइव स्ट्रीम में हो भाई, कमेंट नहीं कर सकते हो क्या भाई? 200 बंदा 200 लाइक कंप्लीट करा दो ना भाई, 200 लाइक कंप्लीट करा दो। अर्जेंटीना हार गया भाई, कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे मैं, आप, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम फैन लोग भाई, मतलब रात को, क्या यार ये हिंदी आता है ना आप लोगों को, सोया नहीं हूँ, जग के मैच देख रहा था, हार गया अर्जेंटीना, मेसी। क्या यार ये सब अच्छा लगता है क्या? इतना मतलब नींद आ रहा है सबको भाई, फिर भी सोया नहीं है। कितना मेहनत करके मैच देख रहा था, पूरा पूरा ख़त्म कर दिया, सब ख़त्म कर दिया। तो आज मेरा हो जाएगा लाइव स्ट्रीम में पहली, लगता है पहली बार हो जाएगा 50,000 व्यूज़ कंप्लीट। वो भी मेरा जीवन में पहली बार 50,000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा मेरे को लगता है लाइव स्ट्रीम का। और 10-15 मिनट लाइव स्ट्रीम कर लूँगा तो ऐसे ही 200 बंदा करते 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 400-500 बंदा आ जाएगा भाई अभी, मेरे को लगता है। क्योंकि सब लोग तो लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया आई थिंक। अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का मैच देख लेता हूँ, हाँ। अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, सब सब भाई एक जगह भाई 108, 148 के वाचिंग, एक लाइव स्ट्रीम में 148 के अभी भी वाचिंग चल रहा है। और एक जगह में चल रहा है 224 के वाचिंग, मतलब सब बंदा तो वहीं पे चला गया भाई। मेरे पास जो जो बंदा बचा हुआ है ना, 300 बंदा भी आया है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 300 बंदों को, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 300 से डायरेक्ट 235 हो गया। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? 300 से डायरेक्ट 235 हो गया भाई, 300 बंदे के बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया 300 बंदे को। चलो, लास्ट एक मैच मैं खेलूंगा, मुझे लगता है मुझे लास्ट एक मैच खेलना चाहिए। ऑफकोर्स खेलना चाहिए भाई, आप लोगों के लिए खेलना चाहिए। इतना मुश्किल से भाई मेरा 50,000 व्यूज़ कंप्लीट होने वाला है भाई, करा दो भाई, आज रात में ही करा दो भाई। अर्जेंटीना हार गया भाई, बट 2030 में ब्राज़ील वर्ल्ड कप लेगा भाई। आप लोग चाहते हो कि ब्राज़ील वर्ल्ड कप ले ले 2030 में? अगर चाहते हो ना भाई, तो दबा के लाइक करो भाई, 100 लाइक कंप्लीट कराओ, और मेरा 50,000 व्यूज़ भी कंप्लीट कराओ, और कमेंट भी करो भाई। कहाँ से लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, कहाँ से लाइव स्ट्रीम देख रहे हो ना, कमेंट कराओ। आज तो मैं 50,000 व्यूज़ कंप्लीट करने ही वाला हूँ भाई, कुछ भी हो जाए 50,000 व्यूज़ कंप्लीट होके ही जाएगा भाई। भाई 200 बंदा एक साथ देख रहे हो, एक साथ 200 बंदा लाइक कर दोगे ना भाई, यूट्यूब एल्गोरिथम को बखला जाएगा, सोचेगा भाई क्या हुआ भाई, एक साथ 200 बंदा ये बंदे को लाइक कर दिया, क्या हो गया, मतलब मैजिक चल रहा है क्या? अभी 200 से 161 हो गया, मतलब 100 बंदा फिर से चला गया कहाँ पे, दूसरा जगह। मतलब लाइव स्ट्रीम में व्यूज़ ऐसे ही हो रहा है कि अप एंड डाउन हो रहा है। तो चलो मैं थोड़ा जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। लाइव में तो बातचीत होगा, फिर मुलाकात होगा कल सुबह ई फुटबॉल मोबाइल के साथ। तो कल मैं आ जाऊँगा भाई ई फुटबॉल मोबाइल के साथ लाइव स्ट्रीम पे, आप लोग भी आ जाना, जो जो ई फुटबॉल मोबाइल खेलते हो तो मेरे साथ खेलना चाहते हो लाइव में, तो ज़रूर आ जाना भाई। कल सुबह 12 बजे मैं आ जाऊँगा, मतलब दोपहर हो जाता है, 12 बजे, 12 बजे से पहले आऊँगा, कोशिश करूँगा सुबह, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा नैंकी सीन एस एट एक्स ने यहाँ पे कमेंट किया भाई, भाई एस एट एक्स ने भाई यहाँ पे कमेंट किया, सीओ स्पेन विल टेक द वर्ल्ड कप। मुझे नहीं पता था कि स्पेन वर्ल्ड कप ले लेगा, बट अभी ले लिया, हाथ में ले लिया, पक्का ले लिया। और फिर से कमेंट किया स्पेन और अर्जेंटीना। मैं तो अर्जेंटीना था भाई, ऑलवेज अर्जेंटीना था, मतलब अर्जेंटीना से पहले ब्राज़ील था। वो क्या है ना, नेमार का बेस्ट फ्रेंड है मेसी, इसलिए भाई मेसी को ही सपोर्ट किया था। और दूसरा बात, मेसी हम लोग का जनरेशन का लास्ट एरा था भाई, सभी को पता है भाई, जो जो बंदा इंडिया से देख रहे हो ना मेरे को, देखो ये हो गया भाई। और 50,000 होने में ना 5 मिनट लगेगा, मेरा 50,000 व्यूज़ आज ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी फिर से आ गया 214 बंदा। भाई सोते नहीं हो क्या आप लोग? इंडिया से बोल रहा हूँ भाई, सोते नहीं हो? अभी आज करा दो मेरे को 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट, तो मैं आज ही मेरा फेस रिवील कर दूंगा भाई।
मेरा एक चैलेंज है भाई, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तभी जाके मेरा फेस रिवील होगा, और फेस रिवील करके मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा आप सभी के सामने। तो 2026 में फेस रिवील करके लाइव स्ट्रीम नहीं करोगे ना तो भाई वायरल होना तो बहुत दूर की बात, कोई देखेगा भी नहीं आपको, मतलब जानेगा भी नहीं। तो फेस भी रिवील करना चाहिए लाइव स्ट्रीम के साथ, तो उस सब के लिए बहुत कुछ लगता है ना, मेरे पास उतना कुछ नहीं है भाई। सिर्फ यही 100 व्यूज़ है भाई, आप सभी लोग हो, क्या पता कौन कौन 100 बंदा मेरे को देख रहा है। और जो जो बंदा देख रहे हो ना भाई, 100 बंदा मेरे को देख रहे हो ना, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार यार। देख रहे हो मेरे को, इतना सपोर्ट कर रहे हो भाई, 5-10 मिनट में मुझे तो रुकना है। 50,000 व्यूज़ मुझे कुछ भी करके, कुछ भी करके, कुछ भी करके भाई मेरे को 50,000 व्यूज़ आज, आज रात को कंप्लीट करना है। चाहे सुबह 5 बज जाए, चाहे सुबह 6 बज जाए, चाहे सुबह 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, कुछ भी बज जाए, बजने दो, बट मेरे को कंप्लीट करना है 50,000 व्यूज़ आज। तो यहाँ पे नॉकआउट स्टेज में क्या देखा, राउंड नॉकआउट स्टेज कंटिन्यू करता हूँ भाई। राउंड ऑफ किसका गेम दिखाना, मतलब कि कौन सा गेम दिखाना भला है। जापान, राउंड ऑफ 32 दिखा रहा है भाई। राउंड ऑफ 32 नहीं खेलना है मेरे को, ऑनलाइन मैच खेलना है भाई, ऑनलाइन मैच खेलना है भाई, यहाँ पे राउंड ऑफ 32 नहीं खेलना है ना भाई। ऑनलाइन मैच खेलूंगा तभी जाके अच्छा लगेगा भाई। 128 बंदा आ गया फिर से, मतलब बंदा आ रहा है जा रहा है, फिर से 200 बंदा आ गया भाई। 200 बंदों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन होने के लिए। आप लोग कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, एक छोटा सा कमेंट करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बंदा ई फुटबॉल कंसोल में खेलते हो ना, कमेंट करो, रात में हो जाएगा एक मैच। और 50,000 व्यूज़ कंप्लीट होने में मेरा बाकी है भाई, 2 मिनट दिखा रहा है मेरे को यूट्यूब। 50,000 व्यूज़ कंप्लीट होने में 2 मिनट दिखा रहा है, तो फिर मेरा 50,000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब का। एक नया नया अचीवमेंट मिलेगा मेरे को यूट्यूब से। 50,000 लाइफ में फर्स्ट व्यूज़ कंप्लीट होगा मेरा, मतलब एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है ना भाई, है ना, सही बोल रहा हूँ क्या। सही है, सही है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा, सबसे बड़ा बड़ा। हाँ, एक जगह 93 बंदा वॉचिंग कर रहा है भाई, सब लोग यहाँ पे गेम खोल के बैठा हुआ है ताकि कुछ व्यूज़ आ जाए। बट मैं सच कह रहा हूँ भाई, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था आप लोग इतना प्यार दे दोगे मेरे को। अभी तक तो प्यार दिया भाई, सपोर्ट भी कर दोगे ना आप लोग भाई, बहुत अच्छा लगेगा। डिवीज़न खेल लूँ क्या एक, नहीं ऑनलाइन खेलता हूँ, ऑनलाइन देखने में मज़ा लगता है। चलो नेक्स्ट यही खेलूँगा, क्या कहते हो, खेल लेता हूँ ना यही वाला। हाँ सही है, खेल लेता हूँ। अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन भाई, यहाँ पे अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन 209 बंदा फिर से आ गया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग भाई, एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरा लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन होने के लिए। चलो भाई, मेरा 50,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन बीधू गेमिंग। खुद को खुद कह रहा हूँ भाई, जीवन में पहली बार लाइव स्ट्रीम पे 50,000 व्यूज़ मेरा कंप्लीट हो गया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबको। लाइव स्ट्रीम बंद करने से पहले एक मैच खेल लूँगा, फिर जाकर लाइव स्ट्रीम बंद कर दूँगा। एक मैच तो होना है भाई, 50,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गया भाई, 50,000 से मुझे लगता है और 5,000 इंक्रीज़ करना है मेरे को। 50,000 से और 5,000 इंक्रीज़ कर लूँगा ना भाई, तभी जाकर अच्छा लगेगा मेरे को भाई। चलो यहाँ पे 90 लाइक कंप्लीट हो गया, और 10 लाइक कंप्लीट करा दो भाई। 100 लाइक का चैलेंज था भाई, ये वाला लाइव स्ट्रीम पे 100 लाइक का चैलेंज था, 100 लाइक का चैलेंज था, और 10 लाइक ठोक के मारो दोस्तों, आप लोग ठोक के मारो 10 लाइक भाई। 100 बंदा भी देख रहा हो भाई, 20 बंदा लाइक कर दो ना, 120 बंदा देख रहा है अभी। अभी चलो 120 से 300 बंदा आ गया, 300 बंदा देख रहा है अभी। अभी 300 से 169 हो गया, फिर से 169 से 178 हो गया फिर से। चलो इतना बंदा एक साथ देख रहे हो ना, लाइक मारते रहो ना, लाइक मारते रहो ना भाई, मारते रहोगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा भाई, ये अच्छा लगेगा भाई। क्या यार, ये सब अच्छा नहीं है ना भाई।
सच कह रहा हूँ। ये देखो 90 लाइक कंप्लीट हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए आप सभी को। अल नसर वर्सेस PSG गेम प्लान मैं आप लोगों को चेक करा दे रहा हूँ यहाँ पे। ई फुटबॉल स्टेडियम भी मुझे क्या लेना है, ई फुटबॉल स्टेडियम मुझे कुछ भी लेना है भाई। अर्जेंटीना हार गया भाई, बहुत दुख हो रहा है मेरे को, अच्छा नहीं लग रहा है मूड फूड। सिर्फ जीवन में पहली बार 50,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गया, वो भी लाइव स्ट्रीम में। मतलब शॉर्ट्स पे भी नहीं आया मेरा आज तक ना, इतना शॉर्ट्स छोड़ा, शॉर्ट्स पे भी 50,000 व्यूज़ कंप्लीट नहीं हुआ। वीडियोस में तो दूर की बात भाई, लाइव स्ट्रीम में 50,000 व्यूज़ में मतलब बहुत बड़ा बात है भाई, सभी को पता है भाई। 50,000 व्यूज़ मतलब बहुत बड़ा बात है लाइव स्ट्रीम में, सभी लोग जानते हो ना, आप लोग जानते हो ना, कमेंट करके बताओ भाई। यहाँ पे 200 बंदा फिर से आ गया। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जल्दी से जल्दी 100 लाइक कंप्लीट कर दो। 95 90 लाइन 91 लाइक हो गया, 91 लाइक हो गया, 91 लाइक हो गया भाई। 100 लाइक कंप्लीट कर दो। मेरे को लगता है सुबह 6 बजे तक ऐसे लाइव स्ट्रीम चालू रहेगा तो मेरा आज 100 के व्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब का। मतलब जितना तेज़ी से व्यूज़ आ रहा है ना भाई, सच में हिंदी में आप लोगों को मेरा वॉइस जा रहा है क्या, फिर आप लोग बाहर से देख रहे हो, दूसरी कंट्री से देख रहे हो लाइव स्ट्रीम, जहाँ से भी देख रहे हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैच स्टार्ट करने से पहले स्टेडियम रिवोल्यूशन, ई फुटबॉल का ये वाला बॉल में नहीं खेलना है भाई मेरे को, तिरंदा प्रो में खेलना है भाई। वर्ल्ड कप का मैच लगाया, चलो मैच स्टार्ट होने वाला है हम लोग का। चैट रेट पे कोई आया है भाई से, चेक कर लेता हूँ। चैट रेट पे कोई आया है। भाई चैट रेट पे स्पेन भाई, मजिस तैयब राइक्स है भाई, मजिस तैयब भाई। क्या नाम है भाई, नाम तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ भाई, इतना मुश्किल सा नाम है भाई आपका। स्पेन आपने कमेंट किया, हाँ बढ़िया। लेमन, लेमनी, लेमन, लेमिनी यमल, बहुत बढ़िया खेला भाई। उससे भी बढ़िया खेला मेसी, बट मेसी से भी बढ़िया खेला स्पेन का टीम, जो अभी कप लेके घर जाने वाला है। सर्गियो रेमोस भी आया था मैच देखने के लिए। आप लोग ने जो बंदा पूरा मैच देखे हो ना, जानते हो सर्गियो रेमोस था, ज़ैवी था, इनिएस्टा था, बहुत सारा बंदा था, चेस फैब्रिकस था, बहुत सारा बंदा आया था भाई, बहुत सारे बंदे आया था भाई यहाँ पे। 180 से अभी मेरा 180 से मेरा व्यूज़ कितना आ गया मैं चेक करा दे रहा हूँ आप सभी को। 180 से कितना आ गया मेरा व्यूज़ चेक कर लो भाई, चेक कर लो। मैं लाइव, चलो थोड़ा गेम पे कंसंट्रेट करता हूँ भाई। यहाँ पे मैच स्टार्ट हो गया। अरे रे 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 रे, अरे रे रे, बहुत मिस्टेक, गलती से गलती पास खेला यार। His positioning and reading of the game, Peter, are second to none, and that allows him to make crucial saves at crucial moments. He can't do it all by himself, though. He'll need to develop a rapport आई with थिंक that मेरे को defence in लगता है order मेरे to keep things डिवाइस में थोड़ा organised at सा the back and प्रॉब्लम हो put रहा the है। opposition at bay. मतलब Well, it's 4 घंटा होने में ना और आधा घंटा बाकी है, मेरा लाइव स्ट्रीम चल रहा है। डिवाइस ग्लिच विच कर गया शायद से, नहीं ले पा रहा है उतना। लेमन, लेमन मेरा है ना, ओ मेरे को सोचा तो मैं उसका है। अरे उसका है, साला आ गया भाई। अरे साला भाई साहब, लेमन दौड़, लेमन दौड़, लेमन दौड़। अबे लेमन कहाँ मार दिया भाई, अबे नीचे मारना चाहिए था ना, कहाँ मार दिया यार लेमन। इतना इतना ऊपर कोई मारता है क्या भाई, नीचे मारना चाहिए था यार, धीरे शॉट लेना चाहिए था। देखो ऑनलाइन मैच चल रहा है भाई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं पॉज करूँगा, अगर मैं पॉज कर दिया यहाँ पे राइट साइड आप लोग देख सकते तो टाइम दिखा रहा है 115, 114, 113, 112, ठीक है, समझ में। और नीचे देखो क्रॉस बटन दिखा रहा है। तो गेम गेम प्लान मैं चेक करा दे रहा हूँ। मेरा मेरा टीम का स्क्वाड देख लो, ये मेरा स्क्वाड है,
सब्स्टिट्यूट में ये सब बंदा है भाई। मेरे पास मेसी है, नेमार भी है, तो मेसी को अभी उतारा नहीं। और उसका टीम देख लो, ये रहा उसका टीम। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है भाई। 100 लाइक कुछ भी करके कमेंट करा दो। ओ यहाँ पे भाई आपने कमेंट किया, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ़ कर देना भाई। दोस्त, स्पेन, हाँ स्पेन वर्ल्ड कप जीत चुका है। स्पेन वर्ल्ड कप ले चुका है, मतलब लेके घर चला गया अभी लगता है मेरे को, मैदान में है क्या। 93, 94 लाइक कंप्लीट हो गया। और 6 लाइक भाई, 160 बंदा देख रहे हो यार, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और 6 लाइक कंप्लीट करा दो भाई। 6 लाइक, प्लीज़, प्लीज़ भाई। मतलब सुबह से, जो सुबह उठा था उसका बाद सोया ही नहीं भाई अभी तक, अभी तक। मतलब कल सुबह ब्लॉग एडिटिंग करना है, फिर जाके स्ट्रीमिंग करना है, फिर जाके काम भी करना है। इतना सब कुछ कैसे करूँगा भाई, अभी सोऊंगा तो इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी 6 लाइक कंप्लीट करा दो भाई। 160 बंदा देख रहे हो लाइव में मेरे को, 160 भाई मेरे को देख रहे हो। 6 लाइक ठोक के मारो भाई, कंप्लीट हो जाएगा मेरे 100 लाइक। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 100 लाइक कंप्लीट करा दो लाइव में। पहली बार 50,000 व्यूज़ के साथ 100 लाइक भी कंप्लीट हो जाएगा लाइव स्ट्रीम का मेरा यूट्यूब। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, ऐसा लाइव स्ट्रीम दिखाऊंगा, गेम प्ले में ऐसा ऐसा गेम प्ले लाऊंगा कि आप लोग सच पे बहुत खुश हो जाओगे। अरे आप लोग भी देखना चाहते हो ना मेरे को फेस रिवील करके लाइव स्ट्रीम करते हुए, मतलब क्या यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली। बंगाली में बात करके वो क्या ज़्यादा हैबिट हो गया, इसलिए हिंदी में बात मुश्किल होता है। मतलब आई एम बंगाली यार, ठीक है। पहला बात तो ये है भाई। नेमार, मिलने वाला था नेमार को बॉल, बॉल छोड़ा भाई को, काफ़ी अच्छा बॉल छोड़ा देखो। उसका भी नेमार है, नेमार नेमार नेमार। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब रे, गोल खा जाता अभी, अभी गोल खा जाता यार, अभी खा जाता यार गोल भाई। पहले मतलब जब आज जब लाइव स्ट्रीम चालू किया था ना, 1,000 व्यूज़ हुआ था, मेरे को लगा था भाई 1,000, 2,000, 3,000 जाएगा। वो मतलब 2-3 हज़ार से भाई 50,000 कैसे चला गया ना भाई, सच में पता ही नहीं भाई। ये देखो भाई, बॉल ऐसे खेलना था, उसको खेलूँगा, नीचे खेलो, शॉट लेना। नेमार क्या बॉल दी हो तूने, मानना पड़ेगा भाई। शॉट, गोल, कोई रोक नहीं पाएगा भाई, कोई रोक नहीं पाएगा। एम्बापे, एम्बापे, एम्बापे। चलो मेरा 60,000 व्यूज़ भी कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच भाई। सभी को हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा, मतलब शुक्रिया अदा भाई कह रहा हूँ कि 60,000 व्यूज़ मेरा आप लोगों ने कंप्लीट करा दिया लाइफ में। पहली बार भाई 60,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गया भाई, सबसे बड़ा बात ये है भाई मेरे लिए। मेरे को लगता था मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीज़ हो गया, व्यूज़ नहीं आता भाई। 50,000 व्यूज़ लाइव स्ट्रीम में ऐसे नहीं आएगा ना, फ्रीज़ हो जाएगा तो कभी आएगा, आप लोग बोलो ना भाई। चैनल फ्रीज़ हो जाएगा तो 50,000 लाइव स्ट्रीम में व्यूज़ कभी आएगा क्या, क्या कहते हो। चलो, अरे बॉल ऐसा कोई छोड़ता है क्या, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था ना। अरे कम से कम 100 लाइक तो कंप्लीट करा दो भाई ना, भाई लोग बहन लोग। भाई 160 बंदा मेरे को लाइव में देख रहे हो भाई, 6 लाइक ठोक के नहीं मार सकते हो क्या। 6 लाइक मारो भाई, इतना मुश्किल से गोल मारा भाई। भाई खेलने में मज़ा लगेगा ना भाई। देखो नेमा को मार दिया भाई, यहाँ पे फाउल मार दिया, ड्रैगन राइस मारा है, ड्रैगन राइस ने फाउल किया, ड्रैगन राइस ने फाउल किया, ठीक है। ड्रैगन राइस ने फाउल किया यहाँ पे। फिर से 160 बंदा देख रहा है मेरे को भाई।
160 बंदा, चलो 100 लाइक कंप्लीट हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जो बंदे ने 100 लाइक कंप्लीट कराया ना मेरे को, जो बंदे ने 100 लाइक कंप्लीट कराया ना ये वाला लाइव स्ट्रीम पे, सच कह रहा हूँ भाई, आप Holland. उस सब बंदे को ना मैं Pass. यही बोलूँगा भाई, आप सभी को यही बोलूँगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, Half an hour played ताकि now. मैं कभी ग्रो कर लूँ Here's a तो ball through आप लोगों को now. याद रख पाऊँ और Rafinha आप लोगों को finds साथ an एक outlet on that flank. मुलाकात कर पाऊँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे आज लाइफ में इतना सपोर्ट दे के And that इतना is आगे well लेके clear of आया target. कि Oh, it was a बहुत brilliant बहुत position शुक्रिया to भाई, set himself बहुत up. बहुत शुक्रिया। Just a shame मैं the मतलब finish भाई left him रात हो empty. गया, सब लोग सो रहे हैं, इतना जोर से लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा हूँ, समझ सकते हो आप, ठीक है। मतलब मम्मी पापा सब लोग सो गया भाई, Modric. अभी मैं अकेला अभी On Ruben Diaz. बैठा हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ धीरे It's धीरे। Kunde. पीसी भी हीट हो गया, डुअल स्ट्रीमिंग पीसी चल रहा है मेरा, मतलब डुअल पीसी स्ट्रीमिंग चल रहा है, स्ट्रीमिंग पीसी नहीं सॉरी। तो सब लोग सो गया ना, इसलिए भाई मुझे को लगता है कि Now it's showdown. क्या हो गया। A quick look. Thought about cutting inside. Neither of these two want to come off second best. Played out to the left flank. He's got plenty of space out wide here. Oh, well cut out. बॉल छूटने वाला था Clever भाई। ball. No way through, so back it अरे रे comes. रे 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 रे, इसका ग्लिच हो रहा है सर। Real chance here. Mbappe. And it's Neymar. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ऑफसाइड हो गया, ऑफसाइड हो गया, Miguel Merino is इसका first ग्लिच हो रहा है, offside. इसका ग्लिच हो रहा है। थैंक यू 102 लाइक कंप्लीट हो गया भाई। लाइक कर रहा है मतलब इसका मतलब बंदा लोगों को मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब बंदे लोगों को मेरे Nuno को, Mendes. वो बांग्ला में क्या Oh, it's बोलता है a भाई, हिंदी में मैं fabulous बोल shot. नहीं Be पा रहा हूँ, happy इतना to lift तोलाला this one तोते हो जा high रहा है now मेरा and भाई have a टर्म, go again कि क्या second. नहीं पा रहा हूँ भाई। Oh, good सच में spread. आज 4 साल बाद मेरा जीवन में Passing 4 साल short लाइव and स्ट्रीम sharp. करने के बाद लाइफ में Rafinha पहली बार in. 50,000 Plenty का of space out wide. व्यूज़ का मुंह And देखा it's भाई। hoisted clear. मेरा जीवन में Could पहली be a बार throw in. 50,000 व्यूज़ का मुंह देखा, वो भी लाइव स्ट्रीम में। 4 साल 5 साल लाइव स्ट्रीम करने के बाद भाई कैसा लगता That है पता pass है ना भाई, surprised इतना everyone, मुश्किल से but भाई, in a good इतना way. मुश्किल से। सपोर्ट It's a करो good भाई, run he's सपोर्ट making करो, out on the left. सपोर्ट करो भाई, Now it's Neymar. सपोर्ट करो, सबको Well, बोल they've रहा हूँ come भाई, to it प्लीज़ this time, प्लीज़ but the भाई। referee has let it go. नेमार निकल ना, Olise. ओली से बहुत अच्छा प्लेयर है भाई, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता था। हालांड आ गया, हालांड Pretty robust defending. तो पहले से ही मेरा Now, दुश्मन and था, the free kick जब से very नॉर्वे cleverly वर्सेस saved. ब्राज़ील का मैच हुआ तब से तो मेरा दुश्मन बन गया। अच्छा He's लगता going है, to have ऐसा a नहीं कि turn भाई taken. उतना लेवल के Must have दुश्मन है। gathered round and they are clearly 141 concerned. वॉचिंग चल रहा है मेरा स्ट्रीम पे, 145 हो गया और 102 लाइक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। उन सब 102 बंदे को मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे तरफ से भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 लाइक ना आप लोग नहीं रहते ना कभी कंप्लीट नहीं होता है, मतलब इसका मतलब मैं यूट्यूब का पावर समझ सकता हूँ, बोल बोल के लाइक कंप्लीट कराया, मतलब आप लोग ने सपोर्ट किया आखिरी दम तक, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो सब लोग सो गया भाई, रात को Well, 4:30 it बज गया, looks 4:30 they will बज be जाएगा तो desperate पूरा to मैं लाइव finish स्ट्रीम strong ऑफ here. कर दूंगा। टाइम हो Seems गया, they're अभी aiming for चेक कर here. लेता हूँ, 4:07 हो Mbappe. गया। मेरे को लग रहा है साढ़े चार Keeping बजे तक, tightly gives him offside. 4:30 बजे तक मेरा लाइव स्ट्रीम चल जाएगा, 4:30 बजे तक चल जाएगा, चल जाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे शुक्रिया अदा करूँ सबका भाई, मैं समझ नहीं सकता। और एक छोटा सा भाई कमेंट आप लोग करो, कहाँ से मेरा लाइव For स्ट्रीम half देख time. रहे हो, आप लोग कहाँ से मेरे को In the देख रहे heat हो of ना, just कमेंट करो, industry or कौन tender सा fun, जगह से a आप लोग little मेरे को देख रहे हो, inspiration and इतना रात में, defensiveness मतलब perhaps रात the only things में, इतना lacking. रात में आप लोग देख रहे हो मेरे को Having लाइव sense स्ट्रीम to पे, come in कहाँ से देख रहे हो, कौन सा following जगह से the देख रहे हो। goal. आज मेरा जीवन का Yeah, मतलब and the सुबह मैं evidence किसका of मुंह what we've देखा था मेरे seen, को नहीं their पता, work, their lead, इतना अच्छा दिन जा रहा है genuine कि intensity and 50,000 a व्यूज़ lot of कंप्लीट हो गया, delivery सॉरी for what they brought to the game. I think they'll want a 60,000 stronger व्यूज़ start. कंप्लीट Just हो lacked गया the मेरा break though. यूट्यूब लाइव It's स्ट्रीम only the का, first issue that they've got. 60,000 व्यूज़ Carried कंप्लीट sensible हो and गया। have made the crucial सभी breakthrough. लोगों से मैं They're यही looking pretty बोलूँगा, satisfied at थैंक्स अ the moment. लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। 4 घंटे से मैं 4 घंटे से मतलब 4 घंटे से ऐसे ही 4 साल
लाइव स्ट्रीम किया 4 साल से 5 साल, मैं डेली लाइक नहीं कर पाया। क्या किस लिए कर नहीं पाया वो लाइव में बता रहा हूँ। काम के कारण, कुछ काम के कारण फिर ऐसा होता है ना मेरा साथ। गाइस लाइव स्ट्रीम करने के लिए बहुत कुछ लगता है, जैसे हेडफोन, माइक वगैरह, कैप्चर कार्ड। डुअल पीसी स्ट्रीमिंग करता हूँ तो सिंगल पीसी से नहीं होता, मुश्किल होता है। तो डुअल पीसी में क्या करता हूँ गाइस, कैप्चर कार्ड के कारण करता हूँ, वो भी कैप्चर कार्ड सस्ता वाला, मतलब 1200 में क्रियो वाला। फ्लिपकार्ट में जो मिलता है एलगाटो नहीं, क्रियो वाला 1200 में। इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, कोई सपोर्ट मत, उस लेवल का सपोर्ट मिल गया मेरे को, आज मिल गया। 100 बंदा मेरे को ये दिखा दिया कि भाई तू ऊपर आ सकता है, तू कोशिश कर भाई, तू ऊपर आ जाएगा। 100 बंदा मेरे को हौसला ये दे दिया कि मैं टूट गया था भाई। मेरे को लग रहा था भाई मेरे अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, मेरा कमेंट्री में भी बहुत बकवास जैसा कमेंट्री है, किसी को भाई अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है यार कमेंट्री में। तो 100 बंदा जब लाइक ठोक दिया ना मेरे को आज, तभी मेरे को ना भाई हौसला मिल गया। 103 हो गया लाइक। थैंक यू सो मच भाई, 103 लाइक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। 116 जन देख रहा है, 103 लाइक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कैसे मतलब, कैसे आपको, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ भाई, कैसे करूँ भाई। 103 लाइक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट भाई। Oh, what a mistake! एक Well, गोल that खाने was वाला है, threatening. एम्बापे आ गया। Look at the space here. हो गया भाई, पॉपअप आ गया यहाँ पे। मैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, मतलब वो कट कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीत जाऊंगा शायद वो। लास्ट मैच खेलूंगा भाई, और एक मैच खेलना है सीरियस। एक और एक मैच खेलना, 93 बंदा आ गया, मतलब बाकी बंदा सोने चला गया भाई। 150 बंदा फिर से आ गया भाई। थैंक्स लॉर्ड भाई। वेलकम टू माय स्ट्रीम, सबका स्वागत है मेरे स्ट्रीम पे ज्वाइन करने के लिए। 104 लाइक हो गया, चलो 104 लाइक हो गया। 65,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गया। आज जीवन में मेरा पहली बार 65,000 व्यूज़ कंप्लीट हुआ है। और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, इतना इतना प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए भाई। और गोल्ड तो मिल गया मेरे को। दूसरा वाला मैच कौन सा लगाऊं वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। दूसरा वाला मैच नेशनल टीम का लगा रहा हूँ, ब्राज़ील लेके खेलूँगा एक मैच। खेलना है ब्राज़ील लेके मेरे को। हाँ तो गेम प्लान में कुछ दिखा रहा है शायद, कोई बंदा रेड कट। ओ भाई साहब, ये तीनों बंदा को कहाँ से उठाओ भाई, ये रेड कार्ड खा के बैठा हुआ है क्या ये लोग। नहीं होगा। औ- अरे ऑटो ऑटो पिकअप प्लेयर्स करना पड़ेगा भाई। इवे नेशनल, यस हो गया, अभी जाके हो गया ऑटोमेटिक। हम्म, अच्छा है। चलो अभी मैच स्टार्ट करता हूँ, चलो। ब्राज़ील वर्सेस किसका मैच होने वाला है देख लेता हूँ, हाँ। एंड थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 72 जन है, मतलब 72 जन है अभी मेरा लाइव स्ट्रीम में। लास्ट 105 लाइक कंप्लीट हो गया। अरे यार, देख के दिल को बहुत सुकून मिला, 105 लाइक कंप्लीट हो गया, देख के ना बहुत सुकून मिला। मतलब 70 जन अभी तक मेरे को देख रहा है। 70 जन में कोई बंदा, आप लोग ई फुटबॉल नहीं खेलते हो क्या? अगर ई फुटबॉल खेलते हो, मेरे को लगता है ना आप लोग ई फुटबॉल मोबाइल खेलते हो, आप लोग ई फुटबॉल पीसी नहीं खेलते हो। सही बोल रहा हूँ ना? आप ई फुटबॉल पीसी नहीं खेलते हो। ये मैच स्टार्ट कर दो, तो ये वाला मैच लास्ट है मेरा, ये वाला मैच खेलूंगा फिर सोने जाऊंगा मैं। चलो आप लोगों के लिए भाई, इतना रात को मेरा तबीयत भी ख़राब लग रहा है सच में, सच में। वो मतलब वो लो प्रेशर टाइप का लग रहा है मेरे को, सीरियस बोल रहा हूँ यार। यार सुबह वही उठा था, कल सुबह उठा था भाई 7 बजे, मतलब कल सुबह उठा था। और कल से सोया भी नहीं, दोपहर को भी नहीं सोया, शाम को भी नहीं सोया, रात तो दूर की बात भाई। अभी मतलब अभी भी अभी भी सोया नहीं है भाई। एक ही कारण, यूट्यूबर बनना है भाई, बड़ा यूट्यूबर कैरी मिनाटी के जैसा। कैरी मिनाटी अकेला की इंडस्ट्री पकड़ लेगा तो भाई मैं क्या करूँगा। हाँ ये नहीं है भाई कैरी मिनाटी की, मतलब कोई ऐसा वैसा गेमर है भाई। अच्छा बहुत मेहनत किया भाई बंदे ने, इतना मेहनत किया ना भाई सच में। और मैं भी, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है ना कहाँ से, सच बात बता रहा हूँ।
कैरी मिनाटी के जो बरदान सॉन्ग है ना भाई, वो सॉन्ग मैं डेली सुनता हूँ। बरदान सॉन्ग, पकड़ो मेरा हाथ, पता है ना सभी को। सही, वो वाला गाना मैं डेली सुनता हूँ, मुझे मेरा जोश जगाने के लिए। और कैरी मिनाटी मेरा क्या लगता है रिश्ते में, मैं बताऊंगा, ये मैच के बाद बताऊंगा। अब अगर आप लोगों को जानना है ना भाई, कमेंट करो कैरी मिनाटी क्या लगता है मेरे रिश्ते में। ठीक है, मेरे रिश्ते में कैरी मिनाटी मेरा मेरा सुपर हीरो लगता है भाई, सच कह रहा हूँ भाई, सच में। मतलब वही बंदे को देख के इंडिया में सोचा था, पहले तो इंडिया में ऐसा कोई इतना बड़ा बड़ा गेमर था या नहीं था उतना, मतलब डिटेल्स में कभी चेक नहीं किया। अभी गलत बोल के तो कुछ फ़ायदा ही नहीं, जो भाई रियल वही बताऊंगा। मतलब फेक फेक में नहीं रहने का मेरे को, रियल लाइफ में रहना है मेरे को, फेक में नहीं रहने का। मेरे को लगता है ये मैच ख़त्म होते होते मेरा 70,000 व्यूज़ हो जाएगा कंप्लीट, और सुबह 9 बजे तक स्ट्रीम चालू रख लूँगा तो गारंटी दे रहा हूँ भाई, 100 के व्यूज़ कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। 100 के व्यूज़ हो जाएगा कंप्लीट। सच में आज का अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन का मैच है, तो आज का मैच में ही मेरे को दिक्कत हो रहा है, मतलब मेरे घर वाले को दिक्कत हो रहा है भाई। इतना रात हो गया, बक बक कर रहा हूँ, मतलब साउंड तो आ रहा है ना, सो रहा है ना, बाजू में ही सो रहा है मेरा मम्मी, फिर भी भाई सेल्फिश नहीं होना चाहिए मेरे को। इसलिए ये वाला मैच मेरा लास्ट मैच है, इसका बाद में लाइव स्ट्रीम बंद कर दूंगा। और जितना जल्दी हो सके आप लोग सब्सक्राइब करो और मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम मेरे लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन कर सको और मेरे को देख सको। विथ फेस रिवील करके लाइव स्ट्रीम करूँगा भाई, मैंने सभी को कहा कि। और हाँ, एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरा कभी कभी हिंदी ना, हिंदी मतलब कमेंट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सब को लिए माफ़ कर देना मेरे को, क्योंकि आई एम ए बंगाली भाई, मैं बंगाली लड़का हूँ, तो हिंदी में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, उसको एडजस्ट कर लूँगा भाई, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब हिंदी में होता है प्रॉब्लम, तो लैंग्वेज और टर्म के लिए ना भाई प्लीज़ जज मत करना यार, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ जज मत करना, लैंग्वेज और टर्म के लिए ना जज मत करना भाई। बोल कहाँ जाऊँगा क्या? अरे भाई साहब, क्या यार, इतना फ्रांस का साथ हो रहा है बे। एक सेकेंड, अरे यार इधर वो नहीं था ना, मेरे को लग रहा था ना इधर। अरे बॉल तो सही छोड़ा भाई, तू नीचे जा, पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। बॉल ए वाला गोल मार देगा, ए वाला भी गोल मार देगा। बच गया, एम्बापे लेने वाला था शॉट, बच गया, बच गया भाई। 140 बंदा आ गया भाई, 140 बंदा आ गया भाई, 105 लाइक कंप्लीट हो गया। फिर से गोल खाने वाला था, बच गया बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बच गया भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स लॉट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करने के लिए। आप लोग कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, एक छोटा सा कमेंट कर दो, और 105 लाइक कंप्लीट कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अभी जो बंदा देख रहे हो ना, लाइक करो भाई, लाइक करो यार, लाइक करना चाहिए। अगर इंडियन हो ना, लाइक करो भाई, हिंदी समझ में आ रहा है ना, लाइक करो भाई। ऐसा नहीं कि हिंदी समझ में आ रहा है, सुन रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा ऐसा कतई नहीं होना चाहिए भाई। मुझे माफ़ कर देना भाई, कि मुझे माफ़ कर देना भाई। मतलब ये वाला मैच इतना गंदा हारने वाला हूँ कि मुझे कतई नहीं पता था। अरे भाई साहब, अरे ये तो साला बहुत डेंजर बंदा है भाई, इतना गंदा मेरे को मार रहा है भाई, अब रुलाएगा क्या? हाँ रोना ही था, ऐसे भी था वैसे भी था, अर्जेंटीना हार गया भाई, वैसे भी रोना था भाई। मतलब आज रात को तो भाई नींद नहीं होगा अर्जेंटीना फैन लोगों का, ठीक है, अर्जेंटीना फैन लोगों का आज रात को नींद नहीं होगा, इसलिए पता है ना, हार गया अर्जेंटीना इसलिए। अरे भाई साहब, ये बंदा मेरे को 6-7 गोल मारेगा, ये वाला मैच मैं लीव करने वाला हूँ।
छः सात गोल मारेगा भाई, The पक्का move was मारेगा। so precise, and मतलब the finish खेल ही नहीं पा रहा हूँ ना, Just when they कहाँ से thought they were खेलूँगा getting भाई। it at one end, they end up shipping it टच back the other. खेलूँगा And it's all कि due to क्या से। wonderful counter-attacking. They hardly had time to even अरे react. यार, And there's only one word to क्या describe that. मजाक चल रहा है बे। Clinical. वाक things तेरी look का वाक, so easy, खराब almost हो too गया क्या easy बे to win. डिवाइस। I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell. One that they hope will continue. Pressing. Oh no, this मार does दे मार not दे look good. मार दे। Goes for a shot. साला साइड में लेके मारता है बे And गोल। in. हाँ चलो, मेरा Again, 70,000 an व्यूज़ excellent कंप्लीट हो गया strike, भाई। and they are बहुत बहुत शुक्रिया soaring. भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Well, it's ये a वाला good मैच rest, हारने but वाला the हूँ। fact it's so one-sided मेरा now is कीबोर्ड getting काम नहीं scary. कर रहा है। This is a gloriously greedy performance. And things are अरे looking यार, here in their अरे favour. एक्चुअली 1-2, भाई you इतना would have गोल खा thought, गया ना when the भाई, last one went in. 5 गोल खा गया और खेलने का मन भी नहीं है। कैसे मतलब ये वाला Well, it चेस isn't भी quite करना the चाहूँगा ना तो कर PlayStation नहीं पाऊँगा resort यार। to risk-taking ठीक at है। this stage. There's plenty of time left yet. Vinicius Junior, and he's in on goal. He's having a hit. इतना जोर से मारते हो नहीं मार, धीरे मारो ना, धीरे शॉट लेना चाहिए था यार। Brazil are showing good धीरे urgency, शॉट but they लेना have to चाहिए था। place more emphasis on service into the box. थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाला मैं आपको तंग करने वाला हूँ क्योंकि 5 गोल खाने के बाद मेरा अंदर इतना हिम्मत बचा नहीं है कि भाई मैं गॉड नहीं हूँ कि 5 गोल, And 5 गोल का that's टक्कर it. में भाई खेल लूँगा। मैं गॉड नहीं हूँ, आई एम नॉट गॉड Remains भाई। for me is to thank you मेसी for है listening. गॉड, That's it मैं for नहीं us हूँ tonight. फिलहाल। Good evening to one and all. हाँ जी, आप लोग सही सुने हो कि मैं गॉड नहीं हूँ भाई। 5 गोल खाने के बाद भाई उतना हिम्मत नहीं है कि भाई बंदे को ये कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मैच खेलूँगा, अच्छे से खेलूँगा, सीरियस खेलूँगा। 94 बंदा मेरे को अभी देख रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। 137 वॉचिंग हो रहा है और 109 लाइक कंप्लीट हो गई, 110। ओ चलो यार, दिल को सुकून मिला भाई, 110 लाइक कंप्लीट हो गया भाई, 110 लाइक। चलो, मतलब धीरे धीरे सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं कि मिलता कुछ नहीं है। मतलब इतना गंदा भाई हार गया। अर्जेंटीना फैन हाथ मिलाओ मेरे साथ, आज रात को आप लोग भी सो नहीं पाओगे और मैं भी सो नहीं पाऊंगा भाई। 5 गोल खा गया, 5 गोल। यहाँ पे बहुत हार्ड हार्ड बंदा आता है, ऐसा नहीं कि भाई इजी इजी बंदा आता है। और सच बोलूँ तो भाई, मतलब ई फुटबॉल, ई फुटबॉल प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स और पीसी पर्सन में इतना टफ गेम प्ले होता है ना भाई, सोच नहीं पाओगे आप। मोबाइल में जितना इजी होता है ना उतना नहीं है भाई। मोबाइल में बहुत इजी है भाई, उतना नहीं, उतना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत टफ है भाई, बहुत टफ। 157 बंदा आ गया भाई। थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे टीम पे ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4:30 बजने में और 10 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है, 4:30 बज जाएगा, मेरा लाइव स्ट्रीम बंद कर दूँगा। जैसे कि आप लोगों को मैं बोला था, ये वाला मैच मेरा लास्ट मैच है, फिर मैं बंद कर दूँगा। और सच बोलूँ तो मतलब ये नशा बहुत अलग टाइप का नशा है भाई। सब नशा एक नशा है भाई, सब नशा एक नशा है भाई। मतलब वो दारू का नशा, सिगरेट का नशा, ड्रग्स का नशा, ये सब अलग लेवल का नशा है। और घूमने का नशा, बाइक राइडिंग का नशा, खेलने का नशा, ये भी अलग चीज़ का नशा है। खाने का नशा, पीने का नशा, ड्रेस पहनने का नशा, शौकीन शौकीन चीज़ खरीदने का नशा, ये भी अलग लेवल का नशा है। और सबसे बड़ा नशा क्या है बताए, बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा नशा है पैसा कमाने का नशा। मतलब पैसा कमाने का नशा सबसे बड़ा नशा है। तो वो नशा जो जो करता है ना भाई, लेजेंड है। और मेरे को एक चीज़ का नशा लग गया, वो है कि अभी अभी लगा है, यूट्यूब का नशा भाई। उतरता ही नहीं है, कैसे उतरेगा भाई, दिमाग से उतर रहा ही नहीं। मतलब सक्सेस जब तक नहीं मिलता, दिल भी तब तक बोलता है छोड़ेगा नहीं। बट एक जगह ना टूट जाता हूँ भाई, सच में। वो बोलता है ना, मनी इज़ ए एवरीथिंग, मनी इज़ ए मोस्ट पावरफुल। सच बात है, हार जाता हूँ भाई वहीं पे, टूट जाता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। पैसे के सामने सब लोग झुक जाता है, मेरे को भी झुकना पड़ेगा भाई।
जितना दिन टाइम है भाई उतना दिन लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, और लाइव स्ट्रीम करते करते अगर सक्सेस हो गया तो भाई पैसा कमाने का टेंशन भी नहीं रहेगा, और गेम प्ले लाइव स्ट्रीम करने का टेंशन भी नहीं रहेगा। यही मेरा टारगेट है। और सच बोलूँ तो भाई घर में बहुत दिक्कत है भाई, समझ रहे हो ना भाई। 700 रुपया और 1200 रुपया का कनेक्टर लगा के लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, और भी 60,000 व्यूज़ के साथ। ठीक है, 60,000 व्यूज़ के साथ भाई लाइव स्ट्रीम चल रहा है मेरा। ऐसी वैसी बात नहीं है, 60,000 व्यूज़ है, पता है ना, 60,000 व्यूज़ मतलब सोच लो। 6,000 तो छोड़ो यार, मेरा मतलब दूसरी टाइम पे ना 600 भी व्यूज़ नहीं आता मेरा लाइव स्ट्रीम पे। 60,000 हो गया, 60,000 बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। सच बोल रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी 130 बंदा मेरे को देख रहे हो, 130 बंदे में से ना मैं बोलूँगा भाई, जितना बंदा मेरे को देख रहे हो ना, 90 बंदा हो गया, 90 90 बंदा देख रहे हैं, 90 जन को मैं यही बोलूँगा भाई, लाइक करो ठोक के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप लोग मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो ना, एक कमेंट कर दो। ये वाला मैच मेरा लास्ट मैच है, ये वाला खेलने के बाद मैं सोने जाऊँगा। गेम प्लान चेक कर लेता हूँ। अर्जेंटीना वर्सेस क्या, अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील, वाह बढ़िया मैच होगा भाई। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होने वाला है। ओपोनेंट का स्क्वाड भी चेक कर लो, डी पॉल है, मेसी है, गैब्रियल बातिस्तुता है। ठीक है, गैब्रियल बातिस्तुता है। 81 आ गया। अच्छा, 111 लाइक कंप्लीट हो गया। 111 अब 112 लाइक कंप्लीट हो गया। थैंक्स लॉर्ड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया लाइक करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई, 112 लाइक कंप्लीट कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ठीक है, मतलब So what a sight this is. 70,000 व्यूज़ भी ना Another मुँह का बात ambitious नहीं है भाई, display of ऐसे वैसे नहीं ambition. आता। Just seems 70,000 to व्यूज़ के never लिए बहुत get मेहनत करना better पड़ता है। skill. और It's of course सच में another goal, आज something to 4 साल emulate. 5 साल लाइव स्ट्रीम Those करने के first बाद day मेरे ने ना feelings, new 50,000 new व्यूज़ का मुंह देखा। expectations, मुझे and इससे the पहले belief that maybe 20,000 व्यूज़ का भी just मुंह नहीं देखा maybe भाई। this time आज it डायरेक्ट will be 50,000 sorted. व्यूज़ का मुंह देख लिया भाई। मतलब हाल तो एकदम छूट गया था Continue to मेरा, set for a टूट stirring गया था मैं। showdown here. The फिर supporters in जाके आज great 50,000 form, and देखने there's के a बाद real ये sense चीज़ of सोच लिया anticipation कि in the air. हो सकता Neymar, है, कोशिश करने से हो सकता है, we're up and running then. क्यों नहीं हो सकता। Two अगर tribes going toe 115 to बंदा toe. मेरे को लाइक किया आज, तो कल And here's Vinicius 1015 बंदा Junior. भी लाइक करेगा, है ना। Neymar picked out brilliantly. Backward it goes. अरे भाई साहब, It's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable match. अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील का मैच है Whatever भाई। he had in mind, that was not it. अरे 3 points from भाई, that. हट यार। Savinho gets the knock सेविनो, here. Anything we should note about him, Jim? Well, this is a player who's always capable of conjuring up that little moment of magic, Peter. He only अर्जेंटीना needs an छोड़ नहीं instinct to रहा make the है, difference with a killer pass or a मतलब। tight run. And that's the kind of thing you need to unlock defenses. अरे भाई साहब, Batistuta! पेनल्टी मिल गया क्या उसको। But hit the post. Well, you might think he got off फ्री lightly. किक He's होगा tossed शायद with a से, full warning. Disappointing, very फ्री disappointing. किक मिलेगा He उसको, was dealing शायद with से फ्री deliberate किक मिलेगा। हाँ cynical as it comes. हाँ, What सही a बोला, start. Free बच kick in a गया dangerous भाई। position in the opening येलो कार्ड minutes. भी नहीं खाया, और ऊपर से गोल भी नहीं खाया। Messi! It's anyone's ball now. गोल खाने वाला था वो। It's made its way to him. दौड़ भाई, दौड़ 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 Well, his दौड़ दौड़। defence proved जीसीएस जूनियर, infallible then. दौड़ That भी। won't be the last they'll see of him. क्या कर रहा है भाई, ग्लिच हो रहा है भाई। Neymar. Nice interception, well timed. नेमार यार, यार ग्लिच किस लिए हुआ His यार। teammates are quite furious with him फ्री as किक, they felt अर्जेंटीना, they were within अर्जेंटीना भाई, reach, but he made बढ़िया, nothing of it. मेसी Of बढ़िया course, he भाई, doesn't look too amused either. सही है। ग्लिच हो रहा है यार, प्लीज़ This भाई, is Messi. ग्लिच मत हो जाओ He's यार। managed to get free. एक वाला गोल खा जाऊंगा शायद से। Can he finish? खा गया, मुझे पता था मेसी से गोल खा जाऊंगा। Neymar. Well, you might अर्जेंटीना गोल मार misunderstand दिया। the sharpness of काश स्पेन movement, को the मारता भाई, certainty of finish. स्पेन को मारते Well, ना it's अभी wonderful कप to लेके see the
घर में was जाते हैं यार, explosive. The यहाँ finish पे मार के क्या exquisite. फ़ायदा है यार। Argentina have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Knocks it out wide. Now it's Savinho. And it's Joelinton. अरे यार पास तो सही खेल रहा हूँ बट मिस्टेक ना मेरा Nothing एक ही huge. जगह में हो रहा है। As a डी बॉक्स counter-attack में मैं chance here for शॉट नहीं ले Argentina. पा रहा हूँ। He's found a way through. And Martinez! मार्टिनेज कहाँ से आ गया था? लाउतारो Mighty मार्टिनेज struck था and क्या? green. भाई ये बंदा बहुत डेंजर बंदा Neymar, है। आज लाउतारो Well, मार्टिनेज he's कहाँ now था भाई? really उसको in a position where देखा नहीं patience and भाई, prudence will serve खेल him नहीं best. पाया क्या? Time's on their side. for Joelinton. Neymar. Now it's Joao Pedro. चाओ पेट्रो खोलने वाला था Messi यार। is always अरे looking साला to मेसी press क्या wide. स्किल दिखा रहा है बे? Martinez. Neymar. चल And he's picked it up out wide. The pressing's intense and it's paid off. थ्रो मिल गया। He's had it ये taken off him. ये शॉट नहीं चलेगा, Martinez. ये शॉट नहीं चलेगा यार। मेलिना मेलिना मेलिनो मेलिनो That's a decent ball. Messi. He's shifting through the gears here. Oh, that ये is शॉट good. नहीं चलेगा यार। Running sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Now it's Joao Pedro. And here's Savinho. And it's Joelinton. Just eases him off अरे the ball. यार एक गोल Joelinton खा के is बैठा a हूँ ना streaky भाई, figure right now. He डर doesn't लग have रहा to give है। it away. Batistuta! अरे भाई यहाँ से गोल मार दिया भाई, Glorious! Sumptuous भाई यहाँ finish! से गोल मार दिया Shivering with यार, joy! And this is यहाँ से getting गोल मार better दिया and भाई। better. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its बढ़िया है finest. बढ़िया। Real cut and thrust. फिर से मारने वाला हो क्या? एलिंसन So तू that's तुम भाई, two now with मार्टिनेज ने आज try. क्या सेव Well, it's a किया great भाई, time for the सच में attacking men to गोलकीपर go. भाई मानना I don't पड़ेगा see any मार्टिनेज need भाई, to change उसको any ही approach. मिलेगा इस साल का Keep भी at it गोल्डन with the ग्लव्स। same intensity and और stay with एलिंसन them. तू They'll have भाई, another break. तू क्लब में ही गोलकीपर का ग्लव्स ले, ठीक Szoboszlai है? wins back the ball. तू रियल लाइफ में छोड़ ही दे भाई एलिंसन। Fernandes. Now who's going to be first to this? क्या यार ये वाला बॉल नहीं मिला, Messi. चैट यार। And it's Molina. मेलिना Molina carries the ball down the मेलिना right. Now, can they get him away? गोल खा गया देख। And Martinez! Lucas Paqueta. Joelinton. अरे बॉल तुम जो पकड़ रहे हो ना तो बॉल छुप क्यों जा रहा है भाई? Defense. Ibanez. Couto. So, हाफ टाइम हो गया, 2 गोल खा के बैठा हूँ, हाफ टाइम हो गया। any strong opinions on the first half? Well, I think बहुत ही it's ज़्यादा worked अच्छा well है। so far, Peter. If it ain't हाफ broke, टाइम हो गया don't fix यार, it. So, I think the manager has to 2 admit गोल it's खा के changed बैठ गया और at this हाफ stage. टाइम हो गया, बस काफ़ी अच्छा Players है। definitely know they're in a derby. चलो This is the अर्जेंटीना second सही World वहाँ Cup पे game. जीत नहीं You can पाया, be sure of that. यहाँ पे जीत गया। So आइसो that's it स्पीड for the जा first रहा है half, टोटो and करके। everyone takes a आइसो well-earned स्पीड rest. टोटो करके कहाँ जा रहा है भाई, पता है क्या? आइसो स्पीड टोटो करके जा रहा है कहीं पे। हाँ अब मैच स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को। 100 बंदा अभी तक मेरे को देख रहे, 118 लाइक हो गया। थैंक यू सो मच भाई लाइक करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो बंदा लोग लाइक कर रहे हो ना, मुझे पता चल गया कि आप लोग इंडियन हो, इंडिया से लाइव स्ट्रीम देख रहे हो मेरा। We're on the कल आ move. जाऊँगा eFootball मोबाइल 12 बजे Well, सुबह, they have to be positive ठीक है? despite the तो scoreline. प्लीज़ One आप लोग thing भी आ they जाना don't मेरे want to साथ do, लाइव स्ट्रीम Peter, पे, is give away ज्वाइन first करना। goal. आप लोग अगर But खेलते हो they ना can't eFootball। afford to get too cagey either. So attack with real अरे confidence. भाई Go for that goal and see if they can unsettle them. चल चल नेमार घुस। Neymar stood his ground strongly. Now it's Neymar. Looking to play him in.
अरे यार, मिलने Well, he वाला था certainly बॉल wasn't in the यार। mood to take any risks. Couto. Now it's João Pedro. Vinicius Junior has it out wide and in space. हिट कर। Getting up there! हाँ, ऑफसाइड हो गया क्या ये वाला? Offside that time. भाई इतना बढ़िया शॉट लिया था यार, ऑफसाइड हो गया भाई। इतना बढ़िया शॉट लिया था। पकेटा लिया था क्या या बुनो गिमारिश? इतना बढ़िया शॉट लिया था भाई, मिस्टेक हो गया भाई मेरा। Lucas Paqueta. Savinho going face to face with his great rival. Linton. Look, they've had their chance to बहुत rebuild बढ़िया from पास mistake. किया वो। Now they've got to stir a revival. He's found a way past. He's got plenty of space out wide here. Knocks it into अरे space. रे रे रे, ठीक है, Fernandes. सही है। नेमार चल, looking नेमार। to receive it in space. He is just caressing the ball. Romero does well to get it back. रोमेरो आज रेड कार्ड खा Quick गया running मैच on पे। show here, but ultimately there was no way through. रेड कार्ड खा गया था रोमेरो आज। And he was alert to it. Now it's Martinez. That looks a cracking ball. Savinho. अरे भाई, एक गोल तो कम से कम करो यार, एक गोल करना चाहिए ना। Savinho. Oh, that's nice. बॉल लेकर निकला था अच्छा। Well, that defending is Off unapologetically on precise, and it's almost personal. And it had to be. No, he's just misjudged that one. He's played it back. He's got no choice here. He had to go backwards. And he's there to clear it. हाँ हो रहा है भाई। And here's Savinho. And it's Neymar. शॉट्स हे भाई नेमार। Yes, tries to clear. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Can he stop it going out? लो को मिलेगा। A throw. थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई 120 लाइक कंप्लीट कराने के लिए। And that has put paid to bed. Great defending, फ्री strong किक and मिलेगा यहाँ से। determined. अभी भी 100 बंदा मेरे को देख रहे हैं, 105 बंदा मेरा लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन है भाई। 105 बंदा, 105 बंदा लाइव स्ट्रीम में है भाई। लाइव स्ट्रीम बंद नहीं होगा आज। 105 बंदा है लाइव स्ट्रीम पे Now there are plenty in the middle भाई, waiting for छोड़ूंगा this. नहीं भाई। Ibanez. Just about up to 75 minutes. That's been cut out one मिलने way. वाला था मेरे को। It's run loose here. Tries to play it through. Chance! अरे रे यार, Oh, that could be a costly miss. Well, they've got a big enough job on their hands as it is, Peter. They really need to be putting those chances away. Oh, he's been caught napping. फंस Oh, गया। he's goal side. He's in, must be. And the shot. बचा लिया अलिंसन, बहुत बढ़िया Right, यार, 3-0 for sure. बहुत बढ़िया। Tell he wanted that too. Still, at least he can smile about it, seeing as they're a couple of goals up. बहुत बढ़िया। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्ट्रीम पे ज्वाइन होने के लिए। एंड थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। 120 लाइक कंप्लीट कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। वाह, एलिंसन के लिए एक लाइक बन जाए भाई, एलिंसन के लिए एक लाइक हो जाए, इतना अच्छा सेव के लिए एक लाइक हो जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, कम से कम He has found the way through. विनीसियस जूनियर को धकेल के फेंक दिया भाई। Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give Wait, the wait, crowd wait. something to cheer about, but that might अरे be रे रे difficult. यार,
Great vision. नहीं होगा। This is Batistuta. That is a अरे crunching यार tackle. कम से कम कहाँ से This is बॉल Messi. Oh, he's been flat फ्री किक there. मिलेगा यहाँ पे? Hernandez has got himself a free kick. फ्री किक मिल जाएगा उसको। Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great नीचे choice, मारा Peter, बंदा ने। but I think I do the former in that position. The final 5 minutes. नेमार नेमार कोशिश किया था भाई। ठीक है नेमार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। Molina has it in a wide position. And that's a good ball. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, अरे and they got यार away with कम it. से कम भाई Well, I यहाँ thought से when तो they बॉल got छोड़ो forward यार। there, the मार odds के were stacked against them. मेसी को मार गिर गया वहाँ पे। आई एम सॉरी भाई, मेसी फैन लोग He's मुझे warming माफ़ up कर for that देना। challenge. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. Brilliant क्या save from Alisson. क्या शॉट मारा Oh, यार। fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. एक्शन वगैरह कुछ Messi नहीं करूँगा falls यार। short. And now they can spring out of defence. Vinicius Junior. Serginho. He's got away. Oh, good take in a good area. Oh, he had to take फिर that. तो And he यार did take it. विनीसियस जूनियर It's really well cleared. हार गया। And there goes अर्जेंटीना the जीत final गया। whistle. अर्जेंटीना फैन लोग, Well, that was आप a लोग यहाँ पे frustrating खुश game. मनाओ, मतलब They were जश्न मनाओ। at देखो times cohesive, very capable. But स्पेन से तो one जीत bad नहीं opponent पाए, who simply ब्राज़ील से did जीत a के। better job. जश्न मनाओ आप लोग। Thoughts on what we've just seen? Yeah, well, I've been on the losing side in games like this, and I can tell you it really does hurt. It's about the fans, and when you let them down, it hurts that bit more. I mean, you can do चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन होने के लिए। एंड सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग, भाई लोग, बहन लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो ना, एक छोटा सा कमेंट करो। इतना मतलब टाइम हो गया भाई, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया भाई। कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो ना, एक छोटा सा कमेंट करो। और यहाँ पे एक बंदा स्पेन कमेंट किया। अच्छा, एक बंदा स्पेन कमेंट किया यहाँ पे, मतलब वनगुड़ा स्पेन कमेंट किया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलो, और मैंने आप सभी से कहा था कि लास्ट मैच है, तो मेरा टाइम भी पूरा हो गया। यहाँ पे मैच हार गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, कितना सारा मैच हारा मैं। भाई सच कह रहा हूँ भाई, ये वाला बहुत टफ है, टफ। इसी वर्जन में बहुत टफ होता है भाई, चेस करना बहुत टफ होता है। इतना आसान नहीं है भाई पीसी वर्जन में, मतलब चेस करना कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो चेस कर लेगा, कोई बंदा आएगा चेस कर लेगा, ऐसा नहीं है। बहुत टफ होता है, यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है भाई। मतलब मतलब सोच लो, यहाँ पे डिवीज़न 1 में जाना कितना मुश्किल है, पता है आपको। टूर्नामेंट लगाऊंगा मैं एक, तो यही मेरा लास्ट मैच है, ब्राज़ील वर्सेस जापान का लास्ट क्वालिफाई, मतलब राउंड ऑफ 32 क्वालिफाई मैच है। तो आज ये पहले क्वालिफाई कर लूँगा राउंड ऑफ 16 में। कल 3 मैच खेलने से ये वाला इवेंट कंप्लीट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा लाइव स्ट्रीम, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई। और इतना रात तक मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ आप सभी के लिए भाई। जीवन में पहली बार भाई मेरा 70,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गया लाइव स्ट्रीम में। मतलब इससे पहले 10,000 व्यूज़ भी बहुत मुश्किल से आता था, तो आज 70,000 व्यूज़, 70,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गया। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को मेरा तरफ से। बहुत बहुत प्यार भाई लोग, आप लोग बहन लोग, बहुत बहुत प्यार भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूँगा आप सभी से कि आप लोग जहाँ से मेरा स्ट्रीम लाइव देख रहे हो ना, तो छोटा सा कमेंट कर दो भाई।
मैच स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट करो भाई। यहाँ पे मैं सेटिंग आप लोगों को चेक करा दे रहा हूँ। यहाँ पे सेटिंग आप लोग देख सकते हो, प्रोफेशनल में है मेरा सेटिंग। मैं इसको कहाँ पे लेके जाऊँगा, सुपरस्टार पे लेके जाऊँगा। सुपरस्टार में देखने में आप लोगों को मज़ा आएगा, तो सुपरस्टार में खेलने में भी मज़ा आएगा। लास्ट मैच है मेरा ब्राज़ील वर्सेस नीदरलैंड का, आई थिंक नॉकआउट मैच है, राउंड ऑफ 32। हाँ, देख सकते हो ब्राज़ील वर्सेस नीदरलैंड का लास्ट मैच है, राउंड ऑफ 32। मैच में स्टार्ट करने वाला हूँ। गेम प्ले ने एक बार चेक करा देता हूँ वहाँ पे सभी को। आप लोग चेक कर सकते हो गेम प्लान यहाँ पे। गेम प्लान आप लोग चेक कर सकते हो। और गेम प्लान में मुझे सेट भी करना था, सेट भी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लाइक देने के लिए और मेरा लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 122 लाइक कंप्लीट हो गया, 1063 वॉचिंग नाउ। अभी 63 इंसान मेरे को देख रहा है लाइव स्ट्रीम पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहाँ से मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, एक छोटा सा कमेंट करो भाई, छोटा सा कमेंट कर दो प्लीज़, छोटा सा। 80,000, ओ माई गॉड, ओ एम जी, वाट द 80,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गया मेरा लाइव स्ट्रीम का। तो कॉन्ग्रेचुलेसन बीदू गेमिंग। मैं तो खुद को खुद कह रहा हूँ, कोई तो कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोल रहा है कमेंट पे, इसलिए खुद को खुद कह दे रहा हूँ भाई। 80,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गया मेरा लाइव स्ट्रीम का, मेरा लाइव स्ट्रीम का 80,000 व्यूज़ भाई। 80,000 व्यूज़ का मुंह देख लिया मैं जीवन में पहली बार भाई। 4 साल 5 साल के बाद 80,000 व्यूज़ का मुंह देखा भाई, 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद 80,000 व्यूज़ का मुंह देखा। थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक यू सो मच भाई। इतना बंदा लाइव स्ट्रीम पे आने के लिए, 100 बंदा लाइक करने के लिए और इतना बंदा सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स अ लॉट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो ताकि मैं अपना फेस रिवील करके लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ दोस्तों। फेस रिवील करके लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ, जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। तो यहाँ पे मैच स्टार्ट होने वाला है हम लोगों का। मैच में लगा दिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैच लग गया भाई। चलो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। मैच स्टार्ट हो गया। अभी मैच पे मैं फुल कॉन्सेंट्रेट करूँगा, ये वाला मैच पे फुल कॉन्सेंट्रेट करूँगा भाई। Well, all of a sudden we're talking a different language, the language of knockout football. Now that the group stages are over, there is no margin for error. Only one of these teams can prevail here. It is do or die time. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Everybody standing for the national anthem of the Netherlands. Well, that was special. Now stand by for this.
this is the final grid. From now on, it is a mad dash to the finish line, Jim. Well, Peter, I think this is the stage where one's chances can depend on the smallest of margins. Yeah, the devil's in the detail, eh? It is indeed, and I think these two sides will be feeling very good having made it through the group stage, but this will be a huge gauge on just how prepared they really are now. And that gets things running. This then the greatest show on the grandest stage. Neither of these two want to come off second best. Played out to the left flank. Now it's Vinicius Junior. Dumfries tries to clear. Serginho's cross. Last-ditch defending, but that'll do. Now it's Gakpo. Now, what about a counter-attack? Marlen. Now it's Gakpo. Now it's Reinders. Gabriel gets the nod here. Anything we should note about him, Jim? I wouldn't expect too much of him right away, Peter. You've got to give him a chance to settle in and get used to life here. Reinders! Brilliant from Reinders! A finish of true class! And it's the Netherlands who take the lead. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So, a breakthrough already. Bruno Guimaraes. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Reinders. And it's Reinders. Now it's Marlen. Oh, good-looking ball. And that pass just didn't quite work. Serginho. And Neymar. Vinicius Junior. Vinicius Junior going face-to-face with his great rival. And it's Gravenberch. He shifted it to the flank. Danilo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Savinho will not want to lose out here, not against this opponent. That is lovely. Shapes to shoot! Marlen. Now it's Marlen. Oh, the less said about that pass, the better. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. Oh, good spread. Savinho. Great vision.
And there's green grass ahead of him. Verbruggen gets his hands on it, and the danger is averted. Dumfries. Somerville. Somerville powering forward here. Knocks it into space. So no flag here. Drills one in. And he thumps it clear. Well, they've got it back in a hurry. Somerville picks it up out wide. João Pedro threads one in. Serginho. And it's Neymar. And here's Vinicius Junior. Vinicius Junior really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. That has been slung wide. Now it's Vinicius Junior. What a letdown when you've got such presence and movement. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And he's picked it up out wide. Gone behind for a goal kick. Marquinhos. And Gabriel. Neymar. Spread it left. It's Vinicius Junior. Serginho receives it in a wide position. And he whips it in. Dumfries. Neymar. Vinicius Junior. Teremos minuto de acréscimo. Spread out to the left. Serginho. Delivered low. And he's cleared it out of harm's way. And that brings the first half to a close. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Agentes de segurança de cada Brazil bloco come in at dirigem-se à half-time sala de on the wrong controle end of a 1-0 imediatamente. scoreline. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. So, half-time in the opener. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. So right back into the action. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. Gabriel. And it's Paquetá. And Marquinhos. Neymar. Bruno Guimaraes. De Jong. Now it's Marlon. That has been cut short. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Somerville. Can he get on the end of this? Gravenberg providing an outlet on that flank. Now this could be a chance. João Pedro. And it's Neymar. Now it's Serginho. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Neymar.
Lobbed in behind. Van der Ven is there and he can get that clear. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Gakpo. Now Van der Ven. Now it's Gakpo. Goes down, but nothing given. Marquinhos. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Marquinhos. It's a really well-measured ball. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Now it's Reinders. He's shifting through the gears here. Van der Ven finding himself in space. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, he's played it in low. And that's the keeper's ball. Neymar. And it's Neymar. He's looking wide. And here's Vinicius Junior. Neymar. Deftly away. Substituição. Time then for the first substitution of the game. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one. Chance for a shot! But he's left disappointed. Serginho is always looking to play quality balls. Crunching tackle. João Pedro. João Pedro charging forward, the ball at his feet. Into the last quarter of an hour. Brazil really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And he's managed to get free. No, he's not getting his way this time. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Some intricate passing, looking to progress the ball. Neymar, that has ended up in no man's land. And it's Gravenberg. De Jong, it's Van Dijk. De Jong, looking to play him in. Oh, he's found support out wide. Gabriel, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Gakpo. He's found a way through. Reinders receives it in a good position here. Shot at goal! Oh, it's fallen kindly here. And he hits the net. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He susses the keeper, couldn't hold on to it, and he's there in a flash. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. Van Dijk. Passing is crisp and sharp. Now it's Kluivert. He has found the way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Savinho. It's an inviting looking ball, that. And there goes the final whistle. Brazil are out in round 1. Ambitions unfulfilled, and it is yet another tale in the vast footballing archive of what could have been. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, this can happen to anyone really, Peter, but questions will undoubtedly be raised तो about गाइस their हम लोग का reaction or मैच यहाँ पे result ख़त्म हो in the गया. face of adversity. ब्राज़ील हार They're गया भाई eager राउंड to ऑफ 32 fit में. their game
when मुझे फिर से everything went रीस्टार्ट to करना पड़ेगा। तो आज के लिए रीस्टार्ट नहीं करूँगा, कल रीस्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए हम लोग का लास्ट मैच ख़त्म हो गया और लाइव स्ट्रीम भी ख़त्म होने वाला है। तो थैंक्स थैंक्स अ लॉट भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी सभी को, आप सभी को बहुत बहुत प्यार मेरे तरफ से, इतना देर तक भाई मेरा लाइव स्ट्रीम बने रहने के लिए। आज के लिए मेरा लाइव स्ट्रीम यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो फिर मुलाकात होगा कल 12 बजे ई फुटबॉल मोबाइल की लाइव स्ट्रीम के साथ। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर दोस्तों। तो मेरा लाइव आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो फिर मुलाकात होगा कल। एंड थैंक यू सो मच भाई। गुड नाइट, टेक केयर। चलो। और जाने से पहले मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि मेरा 80,000 लाइव स्ट्रीम का व्यूज़ कंप्लीट हो गया। और 80,000 व्यूज़ कंप्लीट होने का कारण आप लोग हो भाई। आप लोग ने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, मतलब मेरे लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन किया आप लोगों ने, मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और 100 लाइक कंप्लीट कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन 100 लाइक जो जो बंदे लोगों ने किया, उन सभी को ना भाई इतना, मतलब इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से, इतना शुक्रिया ना अदा करना चाहता हूँ ना कि कुछ कह नहीं सकता भाई। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड नाइट एंड सॉरी, गुड मॉर्निंग होने वाला है और कुछ देर बाद मेरे लिए गुड नाइट और आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। सो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। फिर मुलाकात होगा कल ई फुटबॉल मोबाइल लाइव स्ट्रीम के साथ 12 बजे। चलो।